Gentlemen, distinguished guests, and esteemed participants, a very good evening to all of you. It is with immense pleasure that I extend a warm welcome to each one of you to this online webinar on the sensitization, the stakeholder dealing with the MSc matters, organized by the Rajasthan State Judicial Academy. I am Govinda Amina, Deputy Director at the Rajasthan State Judicial Academy. It's an honor for me to be your moderator for the today's online webinar. Along with me, we have Srimati Seema Mewada ma'am, Additional Director at Rajasthan State Judicial Academy. To start with this event, I invite Additional Director ma'am for the formal welcome address. Good evening, everyone. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to each one of you to this online webinar to sensitize the stakeholders with motor accident claim matters organized by Rajasthan State Judicial Academy. With due veneration, I extend a warm welcome to Honorable Mr. Justice J.R. Midha, former Judge, Delhi High Court. His Lordship has an illustrious career in the legal field and has actively initiated judicial reforms in various jurisdictions. Lordship has also served as a member of the subcommittee of Honorable Supreme Court on use of artificial intelligence in MSCT cases. His Lordship has rendered notable judgments such as Rajesh Tyagi versus Jaibir Singh and Karan versus State of NCT Delhi, and has underscored his impactful contributions to legal jurisprudence. Post-retirement, His Lordship imparts value-based education as a professor of practice at the National Law University, Delhi, and holds esteemed positions at Galgatois University and Rajiv Gandhi National University of Law. His Lordship also chairs the Bar Council of India's Inspection Committee. We are profoundly grateful to your Lordship for your gracious presence and the valuable time spared by you for this webinar. This gathering holds tremendous importance as it brings together a diverse assembly of stakeholders. I extend a warm welcome to all esteemed presiding officers of Motor Accident Claims Tribunal and judges dealing with motor accident claim cases. My words of welcome also extend to the dedicated investigating officers of the rank of Deputy SP and diligent nodal officers representing insurance companies. The focus of first session of today's webinar is on a paramount topic, role of stakeholders in new scheme for the settlement of motor accident claims under the Motor Vehicles Act and Amendment Rules of 2022. This topic takes us to the core of a significant judgment of Honorable Supreme Court, Gohar Mohammed versus Uttar Pradesh State Road Transport Corporation and others. This ruling has set a crucial precedent in motor accident cases, highlighting the role of the investigating officers of police under Section 159 of Motor Vehicles Amendment Act and role of other stakeholders as well in promptly handling accident cases and providing succor to the affected victim and his family. We will be enlightened in this session by a legal expertise, Honorable Mr. Justice J.R. Midha. I am sure His Lordship's valuable insights on the subject will prove immensely beneficial to all of us. Once again, I extend a hearty welcome to all participants and deepest gratitude to Honorable Mr. Justice J.R. Midha for his benign presence. Thank you. I request His Lordship to kindly take over. Thank you very much. I'm thankful to Rajasthan Judicial Academy for inviting me and giving this opportunity to share my thoughts with all of you. See, the law relating to motor accident claims has undergone a sea change by the enactment of Central Motor Vehicle Rules 2022 on 28 February 22, which came into force on 1st April 2023. 1 अप्रैल 2022 से मोटर एक्सीडेंट क्लेम कॉम्पनसेशन का जो लॉ है, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 2022 में लिखा गया है, ये लागू हो गया है.
पर खेद की बात यह है कि ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, जिसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुहार मोहम्मद के केस में डायरेक्शंस इशू की हैं, पर इस डायरेक्शन के बाद भी ये नया कानून जो है अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। मेरे सामने जो एक डाटा भेजा गया है जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा है, उसके हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट में पार्शियल कंप्लायंस है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल कंप्लायंस नहीं है। बाकी डिस्ट्रिक्ट की अभी तक कंप्लायंस नहीं आई है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नया कानून क्या आया है, पहले क्या कानून था और अब नया कानून क्या है। हमारे देश में पूरे वर्ल्ड के जो अगर हम नंबर ऑफ व्हीकल्स देखें तो पूरे वर्ल्ड के 11% व्हीकल हमारे देश में है, पर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट जो हमारे देश में हाईएस्ट है। 4 लाख रोड एक्सीडेंट हर साल 2021 के डेटा के हिसाब से 4,03,116 एक्सीडेंट हुए, जिसमें 1,55,622 डेथ्स हुई। यानी कि हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंट है, सॉरी हर मेखल एक मिनट में एक एक्सीडेंट है और 4 मिनट में एक डेथ है। इतना रिकॉर्ड और कहीं भी वर्ल्ड में नहीं है। मतलब बहुत एक दुखदपूर्ण बात है। अगर देखिए 1.5 लाख लोग की डेथ, 4 लाख लोगों को एक्सीडेंट हुआ और हर एक की फैमिली वगैरह 4 मेंबर भी लगाइए तो 16 लाख लोग जो है हर साल इस चीज से पीड़ित हैं। एक्सीडेंट हो गया वो तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद उसको कॉम्पनसेशन इमीडिएटली ना दी जाए, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो 1 अप्रैल 2022 से पहले जो कानून था वो कानून ये था कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट के बाद जो विक्टिम है, अगर इंजरी केस है तो विक्टिम, और अगर डेथ हो गई है तो उसकी मरने वाले की फैमिली, वो जो है वकील के थ्रू मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल की अदालत में एक केस फाइल करते थे, जिस केस को एज ए सिविल सूट चलाया जाता था और वो 5 से 10 साल के एवरेज पीरियड में वो केस डिसाइड होता था। और ज्यादातर लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं जिनकी डेथ होती है और उनके पास कुछ जीने का साधन ही नहीं है कि उसके बाद वो एक्सीडेंट के बाद वो कैसे अपने आप को जीवित रख सके। उसके बाद अगर हम उसको 10 साल बाद पैसे दें तो उस पहले पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। तो नए कानून में ये प्रावधान किया गया कि नए कानून में उन्होंने कहा कि जो कंपनसेशन है वो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर दे देनी चाहिए। जो सिंपल केस है जिसके अंदर कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है उसमें 6 महीने में पैसे दे दो। जिसमें लायबिलिटी एडमिटेड है इंश्योरेंस कंपनी की, पर उसमें अमाउंट के ऊपर कोई अगर डिस्कशन होना है तो 9 महीने में, और अगर लायबिलिटी में डिस्प्यूटेड है तो 1 साल के अंदर। तो तीन जो है वो सीमा बांध दी गई समय की कि इस सीमा के अंदर हमने विक्टिम को कॉम्पनसेशन देना है। 6 महीने, 9 महीने, 1 साल। और सिर्फ समय सीमा होती तो भी एक सोचने की बात थी भी कैसे दे देंगे इतना जल्दी। तो इसके अंदर पूरा एक सिस्टम बनाया गया, फुल प्रूफ सिस्टम, जिसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटेड मोड में है। ऑटो मोड में है सब कुछ, ऑटो मोड में है, यानी कि इवन केस भी फाइल करने की जरूरत नहीं है, इवन वकील भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटो मोड में है। इसका पहले हम एक उदाहरण देखें। जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अगर मान लीजिए कहीं क्राइम हो गया और पुलिस के नोटिस में क्राइम आ गया तो पुलिस उसकी एफआईआर रजिस्टर करती है। एफआईआर रजिस्टर करके पुलिस उसको इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स कॉपी जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजती है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके 60 दिन में उसकी चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट के बाद कोर्ट जो है उसका कॉग्निजेंस लेके उसमें नोटिस इशू करके और कार्रवाई शुरू कर लेता है। यानी कि क्रिमिनल लॉ जो है वो एफआईआर फाइल होते ही ऑटोमेटिकली सेट्स इनटू मोशन और फिर वो एंड नतीजे तक पहुंचता है केस डिसाइड होने तक। इसी तरह से यहां पर भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटो मोड सिस्टम जो है वो फिक्स हो गया। वो क्या सिस्टम इवॉल्व हुआ इसमें कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होगा तो विद इन 48 आवर्स, 24 घंटे में तो पुलिस जो है एफआईआर लिख ही रही है और एमएम की कोर्ट में भेज रही है। पुलिस 48 घंटे में एक फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट भेजेगी ट्रिब्यूनल को। तो
और उसके बाद पुलिस जो है ड्राइवर को और ओनर को एक फॉर्म देगी, और दोनों पुलिस के कंट्रोल में है क्योंकि ड्राइवर को उन्होंने बेल पे छोड़ा है और ओनर ने गाड़ी लेनी है अपनी। तो दोनों को बेल, ड्राइवर को बेल देने से पहले और ओनर को सुपरदारी पे गाड़ी छोड़ने से पहले उनको फॉर्म देंगे भी ये फॉर्म भर के दो। तो ड्राइवर का फॉर्म आ गया और ड्राइवर के फॉर्म में ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आ गई और इंश्योरेंस की डिटेल आ गई। ओनर के फॉर्म में ड्राइवर का नाम, ड्राइवर के पर्टिकुलर्स, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस पॉलिसी, फिटनेस और परमिट की डिटेल आ गई। तो 30 दिन में आईओ ने उनसे, ड्राइवर से और ओनर से फॉर्म 2 और फॉर्म 3 लेना है। ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ है। इसके बाद पुलिस का काम क्या है कि जो उन दोनों के फॉर्म के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के पर्टिकुलर आ गए, कॉपी आ गई, इंश्योरेंस के पर्टिकुलर आ गए, फिटनेस और परमिट के पर्टिकुलर आ गए, पुलिस इन चारों चीजों को वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करके पुलिस एक इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट देगी, IAR, और ये फाइल करेगी 50 दिन में बिफोर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। इसके बाद पुलिस विक्टिम को फॉर्म देगी, फॉर्म 6A एंड 6B, और विक्टिम को कहेगी भी आप भी फॉर्म भर के दो। इसकी समय सीमा जो है वो रखी गई है 60 दिन एक्सीडेंट से। तो 60 दिन पे हमारे पास विक्टिम का फॉर्म आ गया, पर विक्टिम के फॉर्म पे पुलिस को कुछ नहीं करना। पुलिस को सिर्फ जो करना है वो ड्राइवर और ओनर के फॉर्म पे तहकीकात करनी है। अब पुलिस जो है ये क्लेमेंट के भी फॉर्म को ले लेगी और 90 दिन में पुलिस जो है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट कहेंगे या चार्जशीट के टाइम जो चलान बोलते हैं उस तरह की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 90 दिन में पुलिस फाइल कर देगी बिफोर MACT। और पुलिस जब ये रिपोर्ट फाइल करेगी 90 दिन में, तो जब पेश करेगी तो साथ में ड्राइवर, ओनर, क्लेमेंट एंड आई विटनेस चारों को पेश कर देगी, ताकि केस सर्विस में नहीं चलेगा। जो पहले केस चलता था, ओनर को नोटिस जा रहा है, ड्राइवर को नोटिस जा रहा है, इंश्योरेंस का तो नोडल ऑफिसर कोर्ट में होता ही है, और क्लेमेंट को नोटिस जा रहा है, आई विटनेस को नोटिस जा रहा है, चारों को पुलिस जो है वो कोर्ट में पेश कर देगी। और जब ये डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेके इसको ट्रीट कर लेगी एज ए क्लेम पिटीशन। जैसे क्रिमिनल केस में कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, वैसे ही MACT जो है इस डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट का कॉग्निजेंस ले लेगी और कोर्ट के अंदर ये केस शुरू हो गया। तो कोई क्लेम पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसकी कॉपी दे दी जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के नोडल ऑफिसर को। हर इंश्योरेंस कंपनी ने अपना एक नोडल ऑफिसर हर एक MACT अदालत के लिए अपॉइंट करना है, और MACT को कहा जाएगा भी 30 दिन में आप वेरीफाई कर लो सारी चीजें। क्लेमेंट का जो फॉर्म है उसकी ड्यूटी वेरीफाई करने की इंश्योरेंस की है, पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं है क्लेमेंट के फॉर्म को वेरीफाई करने का। इंश्योरेंस कंपनी को कहा जाएगा कि 30 दिन में आप अपना रिस्पॉन्स लेके आओ। 30 दिन में इंश्योरेंस वाले अपना रिस्पॉन्स ले आएंगे। अब जब वो रिस्पॉन्स लेके आएंगे तो उसके तीन ऑप्शंस हो सकती है। पहली ऑप्शन ये हो सकती है कि इंश्योरेंस अपनी लायबिलिटी एडमिट कर ले कि जी वैलिड लाइसेंस है, वैलिड इंश्योरेंस है, कोई वायलेशन नहीं है और लायबिलिटी बनती है और हम इतने पैसे देने को तैयार है। अगर वो अमाउंट जो है जो उन्होंने ऑफर किया वो फेयर है और रीजनेबल है और क्लेमेंट को एक्सेप्टेबल है, तो ट्रिब्यूनल जो है वो एक कंसेंट अवार्ड पास कर देगी, जिसका टाइम लिमिट हमने रखा है 6 महीने। 6 महीने का मतलब हो गया 180 दिन। इसमें 90 दिन तो ऑलरेडी हो गए डार के, 30 दिन इंश्योरेंस के रिस्पॉन्स के, 90 और 30 120 दिन, 60 दिन का टाइम हमने और रख लिया, 1-2 तारीख हो गई है, तो मैक्सिमम 180 दिन में कंसेंट अवार्ड आ गया। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इंश्योरेंस अपनी लायबिलिटी तो एडमिट करे, पर वो कहे कि जी हम जो पैसे दे रहे हैं वो कम ऑफर करें। मान लीजिए क्लेमेंट के पैसे लॉ के हिसाब से बनते हैं मल्टीप्लायर से 9 लाख रुपए और इंश्योरेंस कहती है हम तो सिर्फ 5 लाख देंगे। कोई इंश्योरेंस का ये जो रिस्पॉन्स है ये कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो कोर्ट कहेगी कोई बात नहीं, ये आप अमाउंट जो ऑफर कम कर रहे हो, या तो कोर्ट जो है इसको हियरिंग के लिए लगा देगी, क्योंकि बहस अब सिर्फ अमाउंट के ऊपर होनी है। अब बहस जो है वो किसी और चीज पे नहीं होनी, सिर्फ लॉ के ऊपर होनी है, भी किस लॉ के हिसाब से कितना बनता है। तो उसके लिए हमने 3 महीने और रख दिए।
9 महीने का टाइम रख दिया ताकि जो 3 महीने में बहस हो जाए और एक रिटर्न अवार्ड आ जाए। तो कोर्ट दोनों साइड की बहस सुन के और जो भी मल्टीप्लायर या जो भी फार्मूला उसको कैलकुलेट करके कोर्ट उसका अवार्ड पास कर देगी। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि इंश्योरेंस अपनी लायबिलिटी डिस्प्यूट करे। इंश्योरेंस कहे जी इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं था, फेक था, या ड्राइविंग लाइसेंस उस कैटेगरी का नहीं था जिस कैटेगरी की गाड़ी चला रहा था, या ड्रंकन ड्राइविंग का केस हो, या चलाने वाला माइनर हो, या इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुकी हो, तो इंश्योरेंस कहे जी हमारी तो जिम्मेवारी नहीं है। तो कोर्ट ऐसे केस में एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। एविडेंस रिकॉर्ड करके कोर्ट जो है एक रिटन अवार्ड पास करेगी, जिसके लिए टाइम लिमिट हमने रखी है 1 साल। तो ये पूरी स्कीम है, जो स्कीम इस नए लॉ के हिसाब से 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गई। तो अगर हम सारे स्टेक होल्डर्स की ड्यूटीज अगर एक बार देखें, तो पहली ड्यूटी जो है वो तो पहला स्टेक होल्डर तो पुलिस है, क्योंकि पुलिस को क्या काम करने हैं? पुलिस को पहला काम करना है एफआईआर फाइल करनी है, दूसरा करना है आईएआर फाइल करनी है, इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट, तीसरा डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, चौथा ड्राइवर और ओनर से फॉर्म लेना है, पांचवा क्लेमेंट से फॉर्म लेना है। ये सारे काम करने के बाद पुलिस, और फिर पुलिस का छठा रोल ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, फिटनेस परमिट, इसको वेरीफाई करना है। तो ये करने के बाद पुलिस का रोल ओवर हो गया, और फिर उसने डार के टाइम पर सबको कोर्ट में प्रोड्यूस कर देना। इसके बाद सेकंड स्टेक होल्डर हो गई इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन में डार की कॉपी मिलने के बाद इंश्योरेंस को सारी चीजें वेरीफाई करनी है और अपना रिस्पॉन्स फाइल करना है डार के 30 दिन के अंदर। ये दोनों लोग अपना टाइम पे अगर काम कर लें तो तीसरा रोल आ गया मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल का। अगर फर्स्ट कैटेगरी में केस फाइल फॉल करता है तो 6 महीने में, सेकंड कैटेगरी में 9 महीने में, और थर्ड कैटेगरी में 12 महीने में। अब इस स्कीम का एक और पहलू है बड़ा इंटरेस्टिंग। इस स्कीम का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है, ये पहला कानून है दुनिया में, इंडिया में तो खासकर पहला मैं कह सकता हूँ, इंडिया के बाहर मैंने अभी इतना एग्जामिन नहीं किया, बट मेरे हिसाब से ये जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम का लॉ है, ये इस वक्त वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लॉ है। सिर्फ टाइम लिमिट ही होती तो भी ये काम मुश्किल था कि जी कैसे कर रहे हैं इतना जल्दी। हर चीज का, हर स्टेप का, हर चीज का और हर स्टेप का एक फॉर्मेट बन गया। तो यानी कि किसी को इतना आसान काम हो गया कि सिर्फ फॉर्म ही भरना है। फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट का फॉर्म 1 है, उसके बाद ड्राइवर का फॉर्म प्रिंटेड है, ओनर का फॉर्म प्रिंटेड है, इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट का फॉर्म प्रिंटेड है, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट का फॉर्म इसके अंदर है, इंश्योरेंस ने जो फॉर्म देना है वो भी फॉर्म है, उसके बाद दोनों पार्टी ने रिटर्न सबमिशन देने हैं उसका भी फॉर्म है, कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल में करना है उसके अवार्ड के भी जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है उनका भी फॉर्म है, उसके कंप्लायंसेस का भी फॉर्म है, उसके बाद एग्जीक्यूशन का भी फॉर्म है। हर चीज के ऑलरेडी इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल 17-18 फॉर्म्स हैं। एक मिनट में टोटल 20 फॉर्म्स हैं। फॉर्म 1 तो है फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट का, फॉर्म 2 है राइट ऑफ विक्टिम्स का, फॉर्म 3 ड्राइवर फॉर्म, फॉर्म 4 ओनर फॉर्म, फॉर्म 5 इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट, फॉर्म 6 विक्टिम्स फॉर्म, फॉर्म 7 डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, फॉर्म 8 साइट प्लान, फॉर्म 9 मैकेनिकल इंस्पेक्शन, फॉर्म 10 वेरिफिकेशन, फॉर्म 11 इंश्योरेंस, फॉर्म 12 victim impact report, form 13 written submissions of the parties, form 14 written submission in injury cases, form 15 summary of computation in death cases, form 16 summary of computation in injury cases, form 17 compliance का, form 18 format of record of awards to be maintained, form 19 annuity scheme, form 20 format.
एक फ्लो चार्ट भी इसके अंदर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एकेडमी को कि अगर सबसे पहले वो फ्लो चार्ट को एक बार स्क्रीन पर दिखाए, जिससे ये पूरी स्कीम जो है, फ्लो चार्ट जो है ये इसी के अंदर है, फॉर्म के अंदर विजिबल है हाँ, सर। ये इसको थोड़ा सा बड़ा करिए। ये देखिए जी, फ्लो चार्ट देखिए। सबसे पहला कॉलम है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। इसके बाद फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट इज फॉर्म 1 बाय द क्लेम्स ट्रिब्यूनल, बाय आईओ टू क्लेम्स ट्रिब्यूनल, और कॉपी लीगल सर्विस अथॉरिटी को और पुलिस वेबसाइट पे डाली जाएगी। सेकंड, राइट ऑफ विक्टिम्स, विक्टिम्स को फॉर्म देना है हमें जिसमें उनके सारे राइट्स हैं। ये फॉर्म 2 है, ये आईओ 10 दिन में दे देगा विक्टिम को। इसका नेक्स्ट स्टेप करिए, 30 दिन के अंदर ड्राइवर से और ओनर से फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 ले लिया जाएगा। उसका वेरीफाई करने के बाद इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट आ जाएगी, जिसकी कॉपी इंश्योरेंस को जाएगी और विक्टिम्स को जाएगी। इसके बाद विक्टिम से फॉर्म 6A एंड 6B ले लिया जाएगा 60 दिन के अंदर। इसके बाद पुलिस जो है वो आईओ जो है, इसके बाद इंश्योरेंस का फॉर्म है फॉर्म 11, यानी सॉरी, इसके बाद आ गया डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट 90 दिन में फॉर्म 7। डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट के बाद इंश्योरेंस जमा कराएगी फॉर्म 11 विद इन 30 डेज। अब इसके बाद 3 सिचुएशंस हैं। अगर लायबिलिटी एडमिटेड है, अमाउंट भी एक्सेप्टेबल है, तो 6 महीने में। अगर लायबिलिटी एडमिटेड है, अमाउंट डिस्प्यूटेड है, तो 9 मंथ्स, और लायबिलिटी डिस्प्यूटेड है तो एविडेंस रिकॉर्ड होगा और 1 साल के अंदर। फ्लो चार्ट देखिए, ये फ्लो चार्ट में कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आ रहा है। इसके बाद फॉर्म 1 पे नजर डालिए जरा। फॉर्म भी देखिए कितने सिंपल है। फॉर्म 1 में एफआईआर नंबर, डेट, सेक्शन, पुलिस स्टेशन, डेट ऑफ एक्सीडेंट, टाइम ऑफ एक्सीडेंट, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहां से इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेट का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। आगे चलिए, नेचर ऑफ एक्सीडेंट, फेटल है, इंजरी है, क्या लॉस टू प्रॉपर्टी है, कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, उन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर, वो गाड़ियां इंपाउंड की या नहीं की हमने, ड्राइवर मौके पे मिला या नहीं मिला, डेथ हुई है तो कितनी डेथ हुई है, इंजरी हुई है तो कितनी इंजरी हुई है। आगे चलिए, हॉस्पिटल जहां पर विक्टिम को ले जाया गया, हॉस्पिटल का एड्रेस और डॉक्टर का नाम, सीसीटीवी कवरेज वहां पे मौके पे लगी हुई है या नहीं लगी हुई, फिर ओनर की डिटेल, फिर इंश्योरेंस की डिटेल, ड्राइवर की डिटेल, दोनों गाड़ियों की, व्हीकल 1 व्हीकल 2, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट है तो। उसके बाद विक्टिम की डिटेल्स। आगे चलिए, उसके बाद कहां पे एक्सीडेंट हुआ है और कितने ड्राइवर, पैसेंजर, पेडेस्ट्रियन, को एनिमल, ये सारी चीजें, कोल्यूजन टाइप। चलिए आगे चलिए, तो ये तो फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट आ गई, जो मौके के ऊपर आईओ जो जो देखेगा चीजें वो बना के और फाइल कर देगा। उसका फॉर्म 2 देखिए, तो फॉर्म 2 के अंदर विक्टिम को हम फॉर्म 2 देते हैं विद इन 10 डेज, जिसके अंदर विक्टिम के जो राइट्स हैं वो उसको पता चल जाते हैं, ये आपका राइट है, ये चीजें आपको मिलेंगी, ताकि वो कल को पुलिस से डिमांड कर सकता है कि मुझे एफआईआर की कॉपी दो,
फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट की कॉपी दो, एफआईआर की कॉपी दो, ड्राइवर के फॉर्म की, ओनर के फॉर्म की, आईएआर की कॉपी, डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट की कॉपी। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इन केसों में आज के बाद अब जो है, जो क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस को 60 दिन में कंप्लीट करनी है, और पुलिस को उसकी कॉपी भी डार के साथ लगानी है, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 60 दिन में आ गई और इसकी डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट का टाइम 90 दिन हमने रखा हुआ है, तो 90 दिन में आ गई। तो बड़े सिंपल फॉर्म है। पर अब सवाल ये उठ रहा है कि ये कंप्लायंस क्यों नहीं हो रही? देखिए, किसी और लॉ के अंदर सब कुछ का फॉर्मेट बना हुआ हो, ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। यानी कि इतनी यूनिफॉर्मिटी हो गई, एक तो यूनिफॉर्मिटी हो गई, नंबर 2 काम आसान हो गया, नंबर 3 आपको सिर्फ फॉर्म ही फिलअप करना है, जो आप मौके पे देख रहे हो आपने वो चीजें भर दी। तो इतना सिंप्लीफाइड होने के बाद भी इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? तो ये गुहार मोहम्मद में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार मैटर टेकअप किया, और उन्होंने कहा जी पुलिस लेवल पे भी ट्रेनिंग देनी जरूरी है, पुलिस ऑफिस, पुलिस के लोगों को कि भी कैसे इंप्लीमेंट करें। इंश्योरेंस के लेवल पे भी उनको ट्रेनिंग देनी जरूरी है। एमएससीटी के लेवल पे उन्होंने कहा कि जुडिशियल एकेडमी जो है दे शुड टेकअप, जैसे आज जुडिशियल एकेडमी ने ये टेकअप किया, ताकि जजेस अवेयर हो। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको वर्निकुलर लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट भी करो और सर्कुलेट करो। वो भी ख्याल राजस्थान में हो गया होगा, ये हिंदी लैंग्वेज में इसको सर्कुलेट हर जगह हो गया होगा। तो अब इसके अंदर क्या परेशानियां आ सकती हैं? और नंबर एक तो ट्रेनिंग पुलिस की भी बहुत जरूरी है और एमएससीटीज की भी बड़ी जरूरी है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर पूछा जाए वो किसका रोल है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है, मान लीजिए जैसे अब कंप्लायंस नहीं हो रही, तो एक तो ऑफ कोर्स पुलिस अपना अपना सिस्टम बना सकती है एंश्योर करने के लिए कि भाई कितने केस हैं, ये टाइम पे फाइल हुआ या नहीं हुआ। एक प्रॉपर जो है इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है जिसमें अगर प्रॉपर टाइम पे कंप्लायंस नहीं हो रही, तो जैसे दिल्ली पुलिस ने शुरू में, दिल्ली में तो ये स्कीम, इससे बेटर वाली स्कीम ऑलरेडी 2009 से लागू है दिल्ली में, तो हर विक्टिम को अब बल्कि टाइम, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने 90 दिन कर दिया डार का, अदरवाइज दिल्ली में तो ये 30 दिन में सब कंप्लीट हो गए, 120 दिन में क्लोज हो जाया करता था। तो दिल्ली में तो कॉम्पनसेशन 2016 दिसंबर 2009 के बाद से सबको कॉम्पनसेशन टाइम पे मिल रही है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी कंप्लायंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? मेरे विचार से सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसकी कंप्लायंस का वो है एमएससीटी का। एमएससीटी को हमने इतनी पावर दे दी कि जब ये एमएससीटी जज जो है ये अवार्ड पास कर देगा, तो एक और फॉर्म दिया हुआ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये है फॉर्म नंबर, मैं आपको बता रहा हूं, ये आ जाएगा फॉर्म नंबर 17 होना चाहिए, 17, फॉर्म नंबर 17 डिस्प्ले करिए। ये फॉर्म नंबर 17 अवार्ड के साथ लिखा जाएगा। अवार्ड के साथ हर कोर्ट जो है वो एक फॉर्म 17 भी लगाएगी कॉपी। जिसके अंदर है डेट ऑफ एक्सीडेंट, डेट ऑफ फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट, date of delivery of form 2 to the victim, date of receipt of form 3 from driver, detailed date of receipt of form 4 from owner, date of interim accident report, date of receipt of victim form, date of filing of detailed accident report, whether there was any delay or deficiency on the part of the investigating officer, if so, whether any action or direction warranted. उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए, मैं यहां पॉज करता हूं कि अगर पुलिस ने ये टाइम पर फाइल नहीं किया
तो एमएससीटी को पावर दी गई है स्कीम के अंदर कि वो रिपोर्ट भेज सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है कि इसमें इस पुलिस ऑफिसर की गलती से हुआ है और इसकी एसीआर फाइल के अंदर ये रिपोर्ट लगा दी जाए कि इसने लॉ को कंप्लाई नहीं किया और इसकी प्रमोशन का टाइम पर उसको कंसिडर किया जाए। तो अगर एमएससीटी जज चाहे डेली कंप्लायंस रिपोर्ट मंगाने के लिए इस एरिया में जितने एक्सीडेंट हुए हैं सबकी रिपोर्ट ले आओ और उन ऑफिसर्स के नाम ले आओ जो उसको डील कर रहे हैं, और जो पुलिस ऑफिसर कंप्लाई नहीं कर रहा उसकी रिपोर्ट भेज के उसकी एसीआर की फाइल में लगाया जा सकता है। उन सबकी प्रमोशन और वर्किंग जो है उस पर स्टिग्मा आ जाएगा। ओवरनाइट 24 घंटे के अंदर एमएससीटी जज चाहे तो कंप्लाई कर सकता है। आगे देखिए, इस स्कीम के अंदर एक और पहलू जो मैं मिस कर गया हूं कि जब भी एक्सीडेंट होगा इंश्योरेंस कंपनी को एक अपना डिजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट करना है 10 दिन में, और उस डिजिग्नेटेड ऑफिसर को जो जो रिपोर्ट देगा वो उसको साइन करके देगा, और उसमें अगर उसने लॉ के हिसाब से कंप्यूट कैलकुलेट नहीं किया, मान लीजिए मोटर व्हीकल्स एक्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से मल्टीप्लायर 15 का लगना चाहिए और वो कहता है मैं तो 10 का लगाऊंगा, या डिडक्शन 1/3 होनी चाहिए, उसने कहा मैं तो 1/4 करूंगा, लॉ के हिसाब से कैलकुलेट नहीं की, उसके नीचे एक डिक्लेरेशन है कि मैंने जो कैलकुलेशन की है मैं लॉ जानता हूं और लॉ के हिसाब से की है, तो ट्रिब्यूनल उसके खिलाफ भी ऑर्डर कर सकता है। देखिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ, वापस वही आ गया, designated officer by the insurance company, whether designated officer of insurance company submitted his reply within 30 days, whether there is any delay or deficiency on the part of designated officer of the insurance company, if so whether any direction warranted। पहली बात, इंश्योरेंस ने अगर 30 दिन में जवाब ही नहीं दिया, पहली बात डिजिग्नेटेड ऑफिसर ही अपॉइंट नहीं किया 10 दिन में, नंबर 2 किया और उसने 30 दिन में जवाब नहीं दिया, 50 दिन में ले आया, तीसरा जवाब ले आया पर उसने कैलकुलेट लॉ के हिसाब से नहीं किया, अपनी मनमर्जी से किया, उसको लॉ ही नहीं आता, तो ट्रिब्यूनल अवार्ड में पास करके उस ऑफिसर का बाय नेम ऑर्डर कर सकती है और कॉपी कहेगी भी इसकी कॉपी इसकी एसीआर फाइल में लगाओ, ताकि प्रमोशन के टाइम देखा जाए इस आदमी को तो लॉ ही नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मल्टीप्लायर 15 का लगाओ, कहता है मैं 10 का लगाऊंगा, डिडक्शन 1/3 होनी चाहिए, 1/4 कर रहा है या 1/5 कर रहा है, तो क्यों ऐसे किया गया और क्यों नहीं 30 दिन में रिपोर्ट दी गई? तो ये भी पावर दी है हमने। फिर आगे अब ट्रिब्यूनल की अपनी वर्किंग के ऊपर है। अच्छा, फिर डेट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ क्लेमेंट टू द ऑफर, फिर डेट ऑफ द अवार्ड, फिर ट्रिब्यूनल की हमने ड्यूटी लगाई है कि क्लेमेंट को कहेगा कि अपना अकाउंट खोलो अपने घर के पास, मान लीजिए आदमी रहने वाला वहां बंगाल गया जिसका एक्सीडेंट हुआ, तो उसके वहां पे अकाउंट खोला जाएगा और उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अब ये ट्रिब्यूनल की वर्किंग के ऊपर है, ये आगे वाले जो कॉलम है इसके ऊपर ट्रिब्यूनल अपनी वर्किंग के ऊपर भी देखा ट्रिब्यूनल ने कंप्लाई किया या नहीं किया। तो अगर ट्रिब्यूनल ये चाहे कि जी मैंने कुछ नहीं करना, मैं ना तो पुलिस से पूछूंगा रिपोर्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे, मैं इंश्योरेंस से भी नहीं पूछूंगा, मैं अपना भी ये रोल नहीं करूंगा, फिर तो कोई वलीवार इसे नहीं है इस कानून का, फिर तो जो हो रहा है वही होता रहेगा। आज सब 1.5 साल होने 1.25 साल होने के बाद भी इस कानून की कोई कंप्लायंस नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इस स्कीम को लागू करने का वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल का है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो हाईकोर्ट का है कि हाईकोर्ट अगर आज चाहे कंप्लायंस रिपोर्ट मंगाना हर डिस्ट्रिक्ट से कि बताओ भी कितने एक्सीडेंट हुए, कितने केसों में 30 दिन में रिपोर्ट गई और कितने केसों में इंश्योरेंस ने 30 दिन में जवाब दिया, कितने केसों में एमएससीटी ने, क्योंकि लास्ट में मान लीजिए अगर पुलिस ने भी काम कर लिया और इंश्योरेंस ने भी कर लिया, ट्रिब्यूनल उसकी 6 महीने की डेट लगा दें, ये हटा दीजिए ये स्कीम। अगर ट्रिब्यूनल ही ठान लेगी कि मैंने कुछ नहीं करना, ना तो पुलिस से पूछना है, और मान लीजिए पुलिस ने किसी केस में सब कुछ टाइम पर दे दिया, इंश्योरेंस ने भी टाइम पर दे दिया, अब ट्रिब्यूनल 6 महीने 9 महीने 12 महीने की छोड़ के 1.5 साल की डेट लगा दें, फिर कौन पूछने वाला है? फिर हाईकोर्ट ही पूछने वाला बचेगा। तो हाईकोर्ट अगर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए और उस मॉनिटरिंग कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सारे डेटा मंगाए, हर पुलिस इंश्योरेंस और एमएससीटी से भेजो, दिल्ली के अंदर ये राजेश त्यागी का मैटर जितना टाइम चला तो
कंटिन्यूसली मैंने इसको इस स्कीम को 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ, ये इस तरह का कानून दिल्ली में, तो इसको हर महीने मंथली स्टेटमेंट पुलिस से, इंश्योरेंस और एमएससीटी से आती थी, और जो एमएससीटी कंप्लाई नहीं कर रहा उसकी भी एसीआर फाइल के अंदर नोटिंग आती थी, ये कंप्लाई नहीं कर रहे, तो दूसरा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईकोर्ट की आ जाती है। तीसरा जो और इससे भी इंपॉर्टेंट पहलू है वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट अब पूछ रही है सबसे भी, बताओ भाई क्यों नहीं कंप्लाई कर रहे। पर मेरा ये मानना है कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है कॉम्पनसेशन की, ये कायदे के हिसाब से वर्ड ओवर इस तरह से मैटर नहीं होते कि हर मैटर कोर्ट में जाए। ये तो हमारे देश में कानून इस तरह का बना हुआ है। बाहर के देशों में एक्सीडेंट होता है, इंश्योरेंस कंपनी वाले लॉस असेस करते हैं, पे कर देते हैं। कोई 1% केस जिसमें डिस्प्यूट होता है वो कोर्ट में आते हैं, अदरवाइज नो लॉ इज रिक्वायर्ड। और नंबर 2 ये देखिए कि इसके अंदर कोई जनरल ट्रायल, पहली बात पुलिस का रोल देखें हम, जैसे पुलिस बाकी ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करती है वैसा यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। आप मौके पे गए, गाड़ी पड़ी हुई है, आदमी वहां पे मरा पड़ा है या इंजर्ड पड़ा है, उसको आप हॉस्पिटल ले गए, गाड़ी के नंबर से आपको ओनर पता चल गया, ओनर से आपको ड्राइवर पता चल गया, आपने सिर्फ मौके के आई विटनेस को देख के और मौके पे जैसे आपको गाड़ियां मिली हैं, अगर कोई फोटो है उसको देख के सिर्फ आपने ये देखना है कि नेग्लिजेंस है या नहीं है। मतलब जैसे जैसे बाकी क्रिमिनल केसों में पुलिस का रोल होता है कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गई, पता ही नहीं, सुराग ढूंढ रहे हो आप, वो वाला रोल नहीं है, एडवर्सरी रोल नहीं है, क्योंकि अनइंटेंशनल एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि हिट एंड रन केसेस हमारे देश में बहुत है जहां पे एक्सीडेंट करने के बाद जो है ड्राइवर मौके से भाग जाता है, बट ज्यादातर केसों में तो ड्राइवर, ओनर, इंश्योरेंस, आई विटनेस, गाड़ियां, विक्टिम सब वही मौके पे आपको मिल गए। तो आपको सिर्फ फॉर्म में तो फिल करना है और ये बताना है कि नेग्लिजेंस है या नहीं है, बाकी काम तो अदालत का है। क्योंकि नेग्लिजेंस ही अगर नहीं है तो फिर तो लायबिलिटी नहीं बनेगी ना, जो कॉम्पनसेशन की पेमेंट की लायबिलिटी है वो नेग्लिजेंस से बनेगी। हाँ, जिन केसों में नेग्लिजेंस नहीं है वहां भी नो फॉल्ट लायबिलिटी का एक प्रोविजन है जिसमें नो फॉल्ट लायबिलिटी पे हम कम अमाउंट देते हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगी भी नो फॉल्ट का वाला केस है या फॉल्ट वाला है। अदरवाइज पुलिस का रोल देखा जाए तो कोई ऐसा एडवर्सरी रोल नहीं है। पुलिस अगर मौके पे वहीं पहुंच के अगर घर ले एफआईआर, तो वहीं पे 10 मिनट में एफआईआर भरा जाता है, फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट और ड्राइवर से ले लिया फॉर्म, उससे ले लिया, वहां चिट्ठी डाल दी भी ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाई करो, इंश्योरेंस वेरीफाई करो, परमिट फिटनेस वेरीफाई करो, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि टाइम पर वो रिपोर्ट देंगे। उसके बाद आपने वो रिपोर्ट के बाद इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट दे दी और फिर विक्टिम का फॉर्म लेके डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट दे दी। विक्टिम के फॉर्म को आपने वेरीफाई नहीं करना। अब इंश्योरेंस के रोल पे आए, इंश्योरेंस को 10 दिन में अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट करना है और लॉ के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लॉ ऑफिसर है, उसको लॉ पता है भी कितनी डेथ हुई है तो क्या डिडक्शन होगी, क्या मल्टीप्लायर लगेगा, कितना डिपेंडेंसी, उसने सारे डॉक्यूमेंट देख के वेरीफाई करके और वो फॉर्म फिलअप कर देना। तो मुश्किल काम नहीं है। ट्रिब्यूनल के सामने आ जाए तो ट्रिब्यूनल में जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स की जो जुरिस्डिक्शन जूरिस्प्रूडेंस है, इसमें लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि ट्रायल चलेगा लाइक ए सिविल सूट, इसमें वर्ड यूज्ड है इंक्वायरी। The motor accident claims tribunal shall conduct an inquiry and follow such procedure as it deems fit. तो CPC is not binding कि भी CPC के हिसाब से ही चलना है। इंक्वायरी और ट्रायल में क्या फर्क है ये भी राजेश त्यागी में और मयूर अरोड़ा वाली जजमेंट है उसके अंदर ये डिस्कस्ड है कि इंक्वायरी और ट्रायल में क्या फर्क है। तो और अगर किसी केस में इंश्योरेंस ने लायबिलिटी एडमिट कर ली और फेयर अमाउंट ऑफर कर दिया तो उसमें तो कोई रोल ही नहीं है ट्रिब्यूनल का अवार्ड पास करने के अलावा। एक तरह से देखा जाए तो एडजुडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी हमें। कैटेगरी 1 के जो केसेस हैं, आजकल इंश्योरेंस बड़ी फेयर अप्रोच ले रही है इंश्योरेंस केसों में, तो कैटेगरी 1 के केसों में तो ट्रिब्यूनल ने 60% केसेस उसी में कवर हो जाएंगे। तो जो 60% केसेस हैं उसके अंदर तो ट्रिब्यूनल ने सिर्फ कंसेंट ही रिकॉर्ड की कि भी ये एक्सीडेंट हुआ है, ये इंश्योरेंस लायबिलिटी एडमिट कर रही है, इन्होंने इतना अमाउंट ऑफर कर दिया है, क्लेमेंट को अमाउंट एक्सेप्टेबल है, अमाउंट फेयर है, इसलिए कंसेंट अवार्ड पास कर दिया। उसके अंदर कोई रोल नहीं है। उसके बाद 20-25% केसेस वो हो जाएंगे जहां पे इंश्योरेंस कम अमाउंट ऑफर करेगी, उसके अंदर भी कोई बड़ा रोल नहीं है।
लॉ आज की डेट में इतना वेल सेटल्ड है एमएससीटी का कि दोनों साइड को सुन के आदमी, मैं जब हाईकोर्ट के रोस्टर पे था तो ऑलमोस्ट 10 मिनट में एक अपील ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाती थी। तो ट्रिब्यूनल के लेवल पे 10 मिनट नहीं 20-25 मिनट लगा लो। एक आदमी कह रहा है 13 का मल्टीप्लायर लगेगा, कहेगा 15 का लगेगा। आपने वो शेड्यूल निकालना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सरला वर्मा, उसके बाद वो दूसरी प्रणय सेठी वाली वो जजमेंट देखनी है, अभी कितना मल्टीप्लायर लगेगा, कितनी डिडक्शन होगी, कितना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा, और कैलकुलेट करके उसके अंदर फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, उसको सिर्फ फिलअप करना है ट्रिब्यूनल ने। तो सेकंड कैटेगरी के केसों में भी अगर आप लगाए मैक्सिमम तो 10-15 मिनट से ऊपर का काम ट्रिब्यूनल का नहीं। थर्ड कैटेगरी केसेस उसमें जरूर थोड़ा समय लगेगा, बट वही एक एडजुडिकेशन है। थर्ड कैटेगरी के जो केसेस हैं जिसके अंदर इंश्योरेंस लायबिलिटी डिस्प्यूट कर रही है कि चलाने वाला माइनर था, एक्चुअली इसमें एविडेंस रिकॉर्ड होगा, और अगर माइनर था तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एविडेंस आ गया कि माइनर था, या ड्रंकन ड्राइविंग है, मौके पर पकड़ा गया ड्राइवर शराब के इन्फ्लुएंस में था, पुलिस का एविडेंस आ गया, इंश्योरेंस की लायबिलिटी नहीं बनेगी। या फेक ड्राइविंग लाइसेंस था, उस केस में रिकवरी राइट देके अवार्ड पास करना, सेम प्रिंसिपल फॉलो होंगे। उस केस में भी अल्टीमेट फाइनल हियरिंग के आप देखो तो ट्रिब्यूनल के लेवल पे तो वैसा काम नहीं है जो एक मिनट के लिए अगर हम मान लें एक सबसे सिंपल से सिंपल सिविल सूट फॉर रिकवरी ले लें, जिसमें मान लीजिए एक आदमी केस फाइल करे, उसने कहा जी मैंने लोन लिया, दूसरा कहा जी मैंने तो लोन लिया नहीं। अब वो 3 विटनेस ले आए प्लेंटिफ और प्रूव कर दे जी इनके सामने मैंने लोन दिया था, और तीनों को क्रॉस किया जाए, क्रॉस में ना टूटे। और डिफेंडेंट 3 विटनेस ले आएगी जी मैं उस दिन था ही नहीं दिल्ली में, मैं तो कलकत्ता था, ये मेरे साथ कलकत्ता में बैठा था, और तीनों विटनेस क्रॉस में ना टूटे। तो ये डिसाइड करना कि लोन बना या नहीं बना, वो भी केस इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दोनों जनों ने 3 विटनेस दिए और दोनों केस में टूटे। तो वो जो एडजुडिकेशन है वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इस सिंपल रोड एक्सीडेंट केस से। तो रोड एक्सीडेंट केस की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इट इज द सिंपलेस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इस स्कीम में और इस फॉर्मेट से ये और सिंपल हो गई, इतनी सिंपल हो गई कि अब, और एक ये सोशल कॉज है कि हमारी अगर जो इंडियन रोड्स और इंडियन व्हीकल्स और इंडियन लोग, जिनको अगर आप देखा जाए तो हमारे देश में हमारे देश में जैसे 4 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट जो देश है हमारे बाद, वो चाइना आता है। वहां पे 60,000 एक्सीडेंट हो रहे थे एक साल में, और उन्होंने फर्दर उसको कम करके अब 30,000 पे ले आए। सोचो, एक तरफ हमारे 4,03,000 एक्सीडेंट एक साल में, और एक जगह दूसरी जगह 60,000 एक्सीडेंट, जिसको वो 30,000 पे ले आए। किसी और वर्ल्ड के देश में 1 लाख से ऊपर एक्सीडेंट नहीं है, कोई ड्राइविंग कल्चर ही नहीं है हमारे यहाँ। तो इंडियन रोड्स जो है, और भी इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत पहलू है रोड सेफ्टी भी। अगर हम, आज हमारा रोड सेफ्टी पे टॉपिक नहीं है, बट अगर हम रोड सेफ्टी पे देखें, लेन ड्राइविंग है ही नहीं, देयर इज नो सेंस ऑफ लेन ड्राइविंग। पेडेस्ट्रियन को क्रॉस करने के लिए खड़ा हो तो हमारे यहाँ कोई, बाहर के देश में अगर आप जाइए किसी भी देश में, अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं भी हैं, कहीं और भी एक आदमी अगर रोड क्रॉस करने के लिए पहुंच जाए तो सारी गाड़ियां चाहे 100-150 पे चल रही है वो सब रुक जाएंगी। बिकॉज बाहर के देश में ये समझा जाता है कि जो आदमी रोड पार करना चाह रहा है उसका पहला राइट है, हमारा ड्राइव करने का सेकंड राइट है। लेकिन यहाँ बिजी रोड पे खड़े रहो 10 मिनट 15 मिनट, अल्टीमेटली आप लाइफ का रिस्क लेके आप भागते हो कि भी कब तक खड़े रहोगे। यहाँ तो सुबह शाम हो जाएगी, कोई रोकेगा नहीं गाड़ी। तो देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर रोड यूजर्स, देयर इज नो लेन ड्राइविंग, और भी बहुत सारे पहलू हैं हमारे देश में। तो बट बहरहाल आज हमारा मुद्दा जो है वो ये है कि अगर एक सोशल कॉज है, हमारी एक किलर रोड्स है जहाँ पे कोई गारंटी नहीं, जैसे पुराने टाइम में होता था कि आदमी जो है वो, पुराने टाइम में हम सुना करते थे 50 साल पहले, कि आदमी जब वहां किसी तीर्थ यात्रा पे जाता था या कहीं पहाड़ पे जाया करता था तो वो पूरी उसको विदाई देके भेजते थे भी इतने रिस्की काम पे जा रहा है, पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा।
पर आज की डेट में देखा जाए तो रोड्स का वही हाल है। कोई गारंटी है कि आदमी जो रोड पे चल रहा है वो वापस आएगा या नहीं आएगा? और ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर हमारी ऐसी किलर रोड है तो, और हमने एक, चलो कानून नहीं था तब भी समझ में आता था भी कानून नहीं है, हम तो सिविल सूट की तरह ही ट्राई करेंगे, और सिविल सूट की तरह नॉर्मल सिविल सूट हमारा 5-10 साल चल रहा है तो ये भी 5-10 साल चलेगा। नोटिस जाएगा पहले ओनर को, फिर ड्राइवर को, फिर इंश्योरेंस को, 2 साल सर्विस में लगेंगे, फिर विटनेस को नोटिस जाएगा, विटनेस ट्रेसेबल नहीं होगा, फिर 2-3 साल उसकी सर्विस पे चलता रहेगा, फिर विटनेस आएगा, फिर एविडेंस रिकॉर्डिंग में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद बहस में लगेगा। तो करते कराते हमने एक सिस्टम बनाया हुआ था। तो किसी को अगर हम बात से पहले कहते भी कर दो जल्दी, तो कहेगा भी कानून ही नहीं है, हम तो पूरा प्रोसीजर तो फॉलो करेंगे ना। पर अब कानून ने पूरा एक एक समर सॉल्ट करके एक कानून नया बना दिया जिसमें हर चीज का फॉर्म बना दिया। अब तो सिर्फ ट्रेनिंग ही देनी है ना, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को, एक नीचे जो आईओ है उनको ट्रेनिंग देनी है भी ये फॉर्म ऐसे भरना है आपको। सब कुछ हम मौके पर देख रहे हो भरता जाना है, कोई नई चीज तो नहीं है उसके अंदर, लॉ तो डालना नहीं कुछ, सिर्फ आपने मौके पे जो देखा वो भरना है। इंश्योरेंस को जो फॉर्म भरा हुआ है वो भी लॉ अप्लाई करके भरना है, और एमएससीटी को लॉ ऑलरेडी पता था, अब उसके लिए फॉर्म बन गए। तो इतना होने के बाद भी अगर हम ना करें तो मेरे ख्याल से एक एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी उसके ऊपर, काबिलियत के ऊपर कहो या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कहो या किसी और चीज पे कहो। और उसकी वजह से क्या देखो क्या कॉन्सिक्वेंस हो गए। एक गरीब आदमी जो मर गया, जिसके परिवार में कुछ खाने को नहीं है, पढ़ाई का नहीं है, उसकी एजुकेशन रुक गई, उसका सर्वाइवल रुक गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाया सिर्फ इस वजह से क्योंकि क्योंकि हमने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। क्योंकि हमने अपनी, जो अगर हम ड्यूटी निभा लेते तो उस आदमी को पैसे मिल जाते। 6 महीने तो आदमी रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, बाकी लोग सपोर्ट करके आदमी सर्वाइव कर लेता है। मैं जब इस जुडिशन में आता हूँ हमेशा विक्टिम को बुला के उसका पूछा करता था, भाई आपका कैसे गुजारा चलता है, कैसे क्या हाल चलता है। तो 5-6 महीने तक तो गुजारा चल जाता है। उसके बाद तो वो कहते जी, जो मिडिल क्लास के भी लोग हैं वो कहते जी उसके बाद हमने, जब बिल्कुल सपोर्ट मिलना बंद हो गया, मकान का किराया भी नहीं हुआ, बच्चों की एजुकेशन भी बंद हो गई, तो मिडिल क्लास की लेडीज उनका जी हमने घर में इधर उधर सफाई का काम करके, वो काम करके हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लेवल पे आ गए। 2 केस मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे 1 मिनट का गैप ले रहा हूं मैं, जस्ट टेक ए गैप ऑफ 1 मिनट जस्ट। कुमार गमन पता नहीं। I request participants to please kindly mute their mic. 2 केस आपसे शेयर करूंगा। एक केस में एक मजदूर की दिल्ली में जो है सड़क पार करते हुए डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली ने केस फाइल किया। तो केस फाइल किया तो 5-7 साल 10 साल केस चला, उसके बाद उसको 8 लाख रुपए कॉम्पनसेशन अवार्ड पे। उसके खिलाफ इंश्योरेंस ने अपील फाइल की, हाई कोर्ट ने कहा पैसे जमा करा दो और अवार्ड स्टे कर दिया। उसके 3-4 साल बाद वो मेरे पास जब हियरिंग के लिए मैटर आया तो हमने पहली तारीख को सुन के उसको डिसाइड कर दिया, अपील खारिज कर दी। अब विक्टिम की तरफ से कोई नहीं था, तो हमने उसको नोटिस जारी किया भी आप आओ और पैसे ले लो। नोटिस सर्व हो गया बिहार में, वो आया नहीं, तो बड़ी परेशानी हो गई। फिर वहां के हमने उसको डीसीपी को रिक्वेस्ट की कि उनको बोलोगे भी आके पैसे ले लें, अब कोई सुनवाई नहीं होनी, आप आ जाओ पैसे ले लो। तो डीसीपी रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी हमने उनको जाके बताया, उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट्स में न्याय नहीं मिलता। हम 10 बार दिल्ली गए, ट्रिब्यूनल के टाइम पर, हाईकोर्ट के टाइम पर लोन लेके गए, आज तक वो लोन नहीं उतार पाए, तो हमें अब कोई विश्वास नहीं रह गया। तो उसने कहा जी हमने उनको बताया कि भी पैसे लेने के लिए आ जाओ केस, उनका नहीं, हम नहीं बिलीव करते आपकी बात।
आप झूठ बोल रहे हो, कोर्ट भी झूठ बोल रही है, हम नहीं जाएंगे। क्या करें बताओ? उनका जी हमें अब विश्वास उठ गया, हम नहीं आएंगे। अल्टीमेटली इंश्योरेंस को हमने रिक्वेस्ट की कि अपने वो उनको ब्रांच मैनेजर को भेजो, वहां जाके पैसे देके आया। एक केस में एक गाड़ी में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई। 2 जो बच्चे बचे, एक लड़का एक लड़की, उनको उसकी ग्रैंड मदर ने मकान बेच के, गहने बेच के उनको पढ़ाया लिखाया। केस फाइल हुआ, अवार्ड पास हुआ, अवार्ड 10 साल में पास हुआ, फिर पैसे जमा हो गए, फिर अपील स्टे हो गया, पैसे रिलीज नहीं हुए, केस चलता रहा। 10 साल बाद या 12 साल बाद हाईकोर्ट में नंबर आया, जब अपील सुन के हमने डिसाइड किया उनको बुलाया भी, आके पैसे ले लो। वो आए तो वो लड़का लड़की दोनों पढ़ लिख के अब दोनों अब्रॉड सेटल हो गए थे, शादी हो चुकी थी। उनका जी हमें अब पैसे नहीं चाहिए। हमें जब पैसे चाहिए थे, हमारी ग्रैंड मदर ने मकान बेचा, गहने बेचे, घरों में सफाइयों का काम किया, उस टाइम पे आपने एक नया पैसा नहीं दिया। आज आप किस मुंह से पैसे दे रहे हो हमें? आप दान कर दो ये पैसे। तो ये बड़े शर्म की बात है। इतना आसान काम, और एक सोशल कॉज के लिए जिसमें हम में से कोई एक जना रोड पे विक्टिम बन गया, और हम जो है उसके लिए इतनी हमें बेरुखी है कि हम जो है वो उसको, अगर ये ऐसे केस हैं जिसमें एमएससीटी चाहे तो रोज के 100 केसेस डिसाइड कर सकता है। सिंपलेस्ट ऑफ, पुलिस वाला चाहे तो रोज के 50 केस डिसाइड कर ले। इसमें कोई चोर नहीं ढूंढना आपको, कोई मर्डर नहीं ढूंढना, कोई गाड़ी चोरी की नहीं ढूंढनी, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ नहीं। मौके पे जो आपने देखा वो भर दिया, और भर के, और बल्कि इस हद तक हमने आगे भी सजेशन दिए हुए हैं कि पुलिस वाला वही मोबाइल पे ले जाए, ड्राइवर मिल गया मौके पे तो ड्राइवर का फोन ले ले, और ड्राइवर के फोन से अपने फोन पे मिस्ड कॉल दे दें, और नंबर सेव कर ले, ताकि कल को ड्राइवर जो है वो ये ना कहे जी मैं मौके पे नहीं था, ये नंबर कुछ गलत बता दें। फिर जितने विटनेस हैं उनकी भी फोटो ले लें, और विटनेस के फोन से अपने फोन पे मिस्ड कॉल दे दे और सेव कर लें, और वही मौके पे गाड़ी की फोटो खींच ले, आसपास सब विटनेसेस की फोटो खींच ले, लाइट की फोटो खींच ले, बिल्डिंग्स की फोटो खींच ले, कोई कोई वहां पे कोई कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग की सेव कर ले। क्या मुश्किल काम है? भाई मौके पे फॉर्म भर दे। तो ये एक, और ये सारा कानून जो है ये देखिए, ये भी एक, हालांकि टाइम आज कम है, इसको, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट राजेश त्यागी की, उस जजमेंट में हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि भाई ये कानून जो है वर्ल्ड का बेस्ट कानून है, इसको आप सेंट्रल मोटर व्हीकल्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। हालांकि गवर्नमेंट को मैंने बहुत केसों में सजेशन दिए, बट इस केस में गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने पूरी जजमेंट को एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया। और इस जजमेंट 8 जनवरी 2021 की जजमेंट को लिखने के लिए हमने पूरे वर्ल्ड के लॉ चेक किए हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्या लॉ है। उन सारे कंट्रीज के लॉ पे फर्दर रिसर्च करके गवर्नमेंट के भी सजेशन दिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की, इंश्योरेंस कंपनी भी सब थी, पुलिस, दिल्ली पुलिस वाले सब लोग थे, तब ये जजमेंट बनाई, एक फॉर्मेट बनाया हमने कि इतना सुंदर फॉर्मेट बनाया जाए जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक हो, ऑटो मोड में हो, किसी को कुछ नहीं करना। किसी और कानून में इस तरह का ऑटो मोड नहीं है। देखिए पुलिस में भी चाहे एफआईआर के बेसिस पे कानून शुरू हो जाता है, एफआईआर का सिर्फ फॉर्म है, और उसके बाद फाइनल चलान का भी एक फॉर्म है ब्रॉड सा, बट इतना डिटेल्ड फॉर्मेट नहीं है। एफआईआर भी डिटेल्ड नहीं है। तो एक थोड़ी सी अभी है हमारे पास 5-7 मिनट हैं, और एक तो रोड सेफ्टी के लिए भी, जहां तक पुलिस, आज पुलिस के लोग भी हैं यहाँ पर, रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत काम की जरूरत है कि एनफोर्स किया जाए कि लेन ड्राइविंग हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने बहुत केसों में सजेशन दिया कि हाईवे के ऊपर से लिकर शॉप हटाई जाए, अदरवाइज इट इज इन्विटेशन कि आओ और यहाँ ड्रिंक करो, ड्राइव करो। तो हाईवे से और 500 मीटर्स फ्रॉम द हाईवे लिकर शॉप्स नहीं होनी चाहिए। फिर रेस्टोरेंट्स को
एक और सजेशन दिल्ली हाई कोर्ट में हमने दिया कि जितने रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं उनको इस कंडीशन पे लाइसेंस दिया जाए कि अगर कोई आदमी ड्राइव करके आया और ऑर्डर करता है तो उसको पहले ड्राइवर वहां पे पूल रखा जाए और ड्राइवर के चार्जेस लिए जाए और वो ड्राइवर ड्राइव करके छोड़ के आएगा। अगर वो ड्राइवर के चार्जेस पे करके स्लिप लेने को तैयार नहीं है तो उसको लिकर सर्व ना की जाए। अगर की जाए तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए बार का। बाहर के देशों में, कई देशों में ये प्रावधान है कि अगर आप जाते हो सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हो आपसे पहले पूछ लेंगे। नंबर 3, एनफोर्स करने के लिए बड़ा सिंपल है। अगर किसी बार के बाहर आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो वहां पे जितने लोग ड्रिंक करके अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं वहीं आप चालान कर सकते हो ना, गाड़ी सील कर सकते हो। हम वहां नहीं चेक करते हैं, हालांकि हमें पता है कि वहां पर 100 आदमी ड्रिंक करके निकल रहे हैं, हम उसको चेक करते हैं वहां सड़क के ऊपर। तब तक तो वो 20 जगह डाइवर्सिफाई होकर निकल गए, गलियों में से कहीं से निकल गए, एक आदमी भी नहीं पकड़ा जाता। अगर हम एक आदमी पोस्ट कर दें कांस्टेबल हर बार के बाहर, जैसे वो गाड़ी में बैठ रहा है और वो ड्रिंक कर रहा है वहीं पे उसको चालान कर दिया और गाड़ी लॉक कर दी, सील कर दी। सिमिलरली लिकर लाइसेंस अगर किसी पार्टी के लिए इंडिविजुअल को दिया जाए कि घर में या कहीं बैंक्वेट हॉल में पार्टी कर रहे हैं तो पहले वो कम से कम जितने लोग एक्सपेक्टेड है कम से कम 20% लोगों के लिए ड्राइवर अरेंज करेगा वहां। अदरवाइज उस पार्टी में अगर मान लीजिए 100 लोग आए और 20 लोग ड्रिंक करके ड्राइव करके जा रहे हैं, किसकी जिम्मेवारी है? ड्राइवर रखे और वो ड्राइवर प्रोवाइड करे उन लोगों को, या चार्जेस लेने ले या खुद बियर करें। अदरवाइज व्हाई शुड ही बी परमिटेड टू सर्व लिकर? फिर हमारे देश में अगर आप देखिए तो जो ड्राइवर्स की वर्किंग कंडीशन है उसके ऊपर बड़ा भारी अंकुश है। बाहर के देश में आप 8 घंटे से ज्यादा ड्राइवर से ड्राइविंग नहीं करवा पाते। यूएस में अगर आप होटल में ठहर रहे हैं तो ड्राइवर को भी होटल में ठहरना पड़ेगा। अगर आप वहां जाके उसके ठहरने का, खाने का अरेंजमेंट नहीं करते तो भी ऑफेंस है। हमारे यहाँ उससे 15 घंटे कंटिन्यूसली ड्राइव करवा के फिर उसको वो छोड़ दिया और कहा कि 300 रख लीजिए और देख लेना कहाँ रहने की जगह, खाने की जगह। अब वो ना उसको खाने की जगह मिली ना सोने की जगह मिली, वो गाड़ी में सो गया, नींद पूरी हुई नहीं, सुबह नींद में चला रहा है, तो इट इज अगेन ए डेंजर। बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके लिए रोड सेफ्टी के लिए अगेन, क्योंकि पुलिस आज यहाँ मौके पे है, they are also participating, they should look into this, how to enforce safety on Indian roads. This is a very, very important aspect by which we should be able to reduce the road accidents also. तो 5 मिनट है, मैं ख्याल कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लें। हालांकि मैं कुछ और डिस्कस करना चाह रहा था कि ये लॉ कैसे डेवलप हुआ दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में, बट उसके लिए एक लंबा सेशन चाहिए होगा। Some other occasion we'll discuss. Which question answer? If any participants have any questions, we can. I think, sir, on the chat box we have some questions. If you can open some. Just 1 minute. Chat box में कुछ questions हैं, sir. One question: IAR is to be informed by the police to insurance company or not, or only at the time of submitting DAR insurance will be informed? Sorry, will you just repeat it? Sure, sir. There is a question from Rishikesh Kumar. He has asked that IR is to be informed by the police officer to insurance company or not, or only at the time of submitting DR insurance will be informed, sir. नहीं, he has to be informed. अगर इंश्योरेंस के पर्टिकुलर आ गए हैं तो इवन एफआईआर की कॉपी भी हमने देनी है उनको, ताकि इंश्योरेंस तो इन्वॉल्व होना है एट द अर्लीस्ट। सर, हमें तो इंश्योरेंस को इमीडिएटली इन्वॉल्व करना है। इंश्योरेंस they are very proactive now. There is one more question, sir. Is there any question from Amit Sharma? He has asked, is there any time limit fixed for the decision of the criminal court? I think it's from some insurance company. He has asked the question. क्रिमिनल कोर्ट के टाइम लिमिट में हमने उधर डील नहीं किया। हमने क्रिमिनल कोर्ट का टाइम लिमिट हमने डील नहीं कर रहे। हाँ, पुलिस का जो चलान फाइनल रिपोर्ट फाइल होनी है वहां तक हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि नेग्लिजेंस जरूरी है, नेग्लिजेंस फाइंड आउट करनी जरूरी है। इसलिए
क्योंकि अगर नेग्लिजेंस तो तभी क्लियर होगी जब पुलिस अपना 173 की रिपोर्ट देगी। तो 173 की रिपोर्ट जब आएगी तो नेग्लिजेंस 173 की रिपोर्ट को डार के साथ फाइल करना है। Sure, sir. There is one more question, sir. They have asked that how much time is given to the insurance company for the investigation of claim for compensation against it, sir. देखिए 30 डेज का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ डार। डार की कॉपी जिस दिन को दी जाएगी उस दिन से 30 दिन का टाइम है उनको डिसीजन लेने में। They have to appoint their own surveyor or investigator. They have to verify everything. और विक्टिम का फॉर्म वही वेरीफाई करेंगे। विक्टिम के फॉर्म पे पुलिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ड्राइवर और ओनर के फॉर्म को वेरीफाई करने की है। Sir, there is last question, I think, from Rishikesh Kumar again. He has asked that, sir, CCTV camera footage to be inserted in charge sheet or not? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर अगर आप देखेंगे डार में सब कुछ है, सारे पॉसिबल जितने आप क्वेश्चन सोच सकते हो वो सारे डार के अंदर है। मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट का भी फॉर्मेट हमने इसमें बनाया है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। I think there is one more question from Udaipur, sir. He has asked how many days the FIR to be registered of an accident. I think this is a general question, sir. And FIR तो जैसे इंटीमेशन आए एक्सीडेंट FIR होनी चाहिए, उसमें तो टाइम का गैप होना ही नहीं चाहिए। one पुलिस more, को जैसे इंटीमेशन कहीं से भी आए कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस हैज टू इमीडिएटली रजिस्टर FIR। this is question from United Insurance India Company, sir. One more question from the UIIC, sir, is that they ask what is the clause of 48 days, sir? Clause of Days, 48 days, sir. I think he wants to ask about 48 the hours 48 बोला है। Sir, sorry to disturb you, sir. It's 48 hours, sir. 48 hours. Wrongly mentioned. 48 आवर का रूल है ना जी। Sir, इसके अंदर जो रूल है आप देखिए अगर yes, sir. this is I think it should be, I'll give you the rule number also. Rule number 2, intimation of accident to the claims terminal and insurance company within 48 hours. IO shall intimate the accident to the claims terminal within 48 hours of the accident by submitting FAR in Form 1. If particulars of the insurance are available, intimation of the accident in Form 1 shall also be given to the nodal officer of the insurance company. A copy of Form 1 shall also be provided to the victim's state legal service authority insurer and shall also be uploaded on the website. तो वेबसाइट पे आप उसको लोड कर देंगे और जिसने भी देखना हो देख लेगा। इंश्योरेंस कंपनी रोज शाम को खोल के देख लेगी भी कितने एक्सीडेंट हुए, कौन सी गाड़ी उनकी इंश्योर्ड है। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लॉ है जो इस वक्त हमारे देश में आया है। ऐसा लॉ कहीं नहीं है और सबसे सिंप्लीफाइड लॉ है। इससे सिंपल लॉ नहीं हो सकता। देखिए नॉर्मली आप देखिए लॉ को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एक सब्सटेंटिव लॉ, एक प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हमें सिर्फ ये बताता है कि what are the rights, liabilities or ingredients of an offense अगर criminal law है। सब्सटेंटिव लॉ से आंसर नहीं निकलता। आप अगर देखिए फॉर एग्जांपल हम मर्डर की डेफिनेशन देख लें तो उसमें ये लिखा है कि ये इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे हैं तो मर्डर है, अगर ये नहीं पूरे हो रहे तो मर्डर नहीं है। बट अगर हम देख रहे हो किसी पर्टिकुलर केस में वेदर इट इज मर्डर और नॉट, उससे आंसर नहीं मिलता आईपीसी से। आईपीसी तो ये बता रहा है कि ये इंग्रेडिएंट फुलफिल हो गए हैं तो बन गया, नहीं हुआ तो नहीं बना। तो substantive law doesn't give the answer. Procedural law has again two types. One strict procedural law, CRPC, CPC, and other is Evidence Act. Procedural law tells us what route to follow. And then evidence law tells us what are relevant facts, what are admissible facts, who has the onus to prove, and what are the rules of cross-examination, etc. How to collect the evidence. But even procedural law and the
evidence law does not tell us the answer whether a particular offense or a legal right, civil right is created or not. But this particular rule, Central Motor Vehicle Rule, is an amalgamation of the substantive law, procedural law, evidence law, and by the time you complete the form, the answer comes automatically. If you see the final form which the MSCT has to fill up, everything is properly filled up. वकील के रिटर्न सबमिशन का भी फॉर्म दिया हुआ है, उसी को फॉर्म को भरते भरते नीचे आंसर आ जाता है कि क्या कॉम्पनसेशन बनी, कितनी कॉम्पनसेशन बनी. It is a fine amalgamation. Yes, any other question? सर मैं जज एमएससीटी बीकानेर निवेदन कर रही थी. सर हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अभी हमने एसपी को 2 बार लेटर लिख दिया. इसका 1.25 साल के करीब ये जब एक्ट को एप्लीकेबल हुए हो गया, उसके बावजूद भी हमारे पास सिर्फ 2 पुलिस स्टेशन से एफआईआर आई हैं. उसमें भी उन्होंने चार्जशीट फाइल की है या नहीं की है ये हमें नहीं पता. और इसके अलावा जो सेटलमेंट प्रपोजल है उसके लिए जो 30 डेज का टाइम है हम इंश्योरेंस कंपनीज को दे रहे हैं, लेकिन उनका ना तो अभी तक कोई नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, ना ही कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट हुआ है. तो इस वजह से सर यहाँ पर नए एक्ट को अप्लाई करने में बड़ा दिक्कत आ रही है. हालांकि मैंने एक ऑर्डर भी दे रहा हूँ आपको, इसका समझ गया आपका सवाल. इस बारे में सर मैंने एक ऑर्डर भी किया है यहाँ पर कि इंश्योरेंस कंपनी को 18% इंटरेस्ट के लिए मैंने किया है. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सर जब तक अब इंश्योरेंस कंपनी हेल्प नहीं करेंगी हमारी, तो हम ये अर्ली डिस्पोजल नहीं कर पाएंगे. और सेम यही पोजीशन पुलिस स्टेशन से है. वहाँ पुलिस पर भी स्टेशन में आप एफआईआर की कॉपी मंगाइए अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आईओ का नाम मंगाइए. सर अभी भी नहीं आ रही. इवन राजस्थान में तो कहीं भी नहीं आ रही होगी. आपके पास में अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी सर चेक कर सकते हैं. राजस्थान में नहीं हो रहा है ये कि ये जो मुझे ये पुलिस है बताइए, एफआईआर की कॉपी और आईओ का नाम तो मिल सकता है ना आपको, या वो भी नहीं अवेलेबल है? अगर आपके पास एफआईआर का नाम नंबर है और आईओ का नाम और नंबर है, तो आप स्ट्रेट अवे रिपोर्ट बनाइए कि इसकी एसीआर फाइल में लगा दिया जाए कि ये आदमी जो है कंप्लाई नहीं कर रहा लॉ को. Therefore, he should not. He doesn't know the law. He's not complying, and he should never be promoted. So and also, if the SHO and the other senior officers are not willing to comply, their name report can also be sent to the government. You see, you can't. What is the? How can a person who is saying I will not comply with the law is daring to do it? नहीं सर, मना तो करने की बात ही नहीं ना. जैसे एसपी को हमने यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं, लगातार 2 बार लिख दिया. हाईकोर्ट को भी हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी इस बारे में, लेकिन वो नए एक्ट के कंप्लायंस के अंदर हमारे पास तो कोई रिपोर्ट्स आई नहीं रही ना. ठीक है, तो इसका मतलब आईओ जो है वो फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट, आईएआर और डार फाइल नहीं कर रहा ना. तो आप रिपोर्ट बनाइए कि इसकी एसीआर की फाइल में लगाया जाए और नोट किया जाए कि ये आदमी लॉ को कंप्लाई नहीं करता डिस्पाइट ऑर्डर्स. एक शोकॉज दे दीजिए पहले. सर माफ कीजिएगा, हमें पता तो हो कि भाई इस पुलिस स्टेशन में इतने एक्सीडेंट के केस फाइल हो चुके हैं, उसके बाद में करें ना ये सारी कार्रवाई. तो हमें यही नहीं पता है, हम सिर्फ लेटर ही लिख रहे हैं अभी तक. तो आप जो है वहां से जो आपकी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट है वहां से एफआईआर की कॉपी तो मंगा सकते हैं, या पुलिस को डायरेक्शन आप दीजिए कि वो एफआईआर कॉपी भी नहीं दे रहे आपको. ये तो फिर इसके अलावा राजस्थान में मेरे ख्याल से यही पोजीशन है अभी. नहीं सर, लेट मी इंटरप्ट सर. दिस इज अभय जैन. मैं एमएसीटी बांसवाड़ा में हूँ. हाँ जी. अब सर बांसवाड़ा में मैंने पूरा इम्प्लीमेंट ये कर दिया है सर. इट इज रॉन्ग टू से कि राजस्थान में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. मेरे पास 70 एफआईआर भी आ गई है, आईआर भी आ रही है, सारे आईओज भी आ रहे हैं सर मेरे पास, एंड आई एम मॉनिटरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो. कांग्रेचुलेशन. मैंने देखी आपकी रिपोर्ट. मेरे पास 2 ही डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट आई है. बांसवाड़ा की कंप्लायंस सिर्फ बांसवाड़ा में ही हो रही है. मेरे पास सर 75 आईएआर आ गई हैं. मैंने सारे एसएचओस की मीटिंग की, डीवाईएसपी से मीटिंग की, एसपी को भी मैंने बुलाकर मीटिंग की, एंड और मैंने आईओस के साथ भी मीटिंग की है सर. अभय जी, आप ये बताइए आपने कैसे एनफोर्स किया ये?
Sir, I called up the SP and the DIG, sir. And उनको ये जजमेंट की कॉपी भी दी और उनको कहा कि इसकी कंप्लाइंस आपको करनी है. They immediately took out the compliance report to the concerned SHOs. और सारे SHOs क्योंकि सर मेरे कोर्ट से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अटैच कर दिए बाय ऑर्डर ऑफ 1 मई. तो सारे SHOs की फिर मैंने फेज मैनर में सारे SHOs से मीटिंग ली सर. I spent almost 2 to 3 hours per day with all the SHOs. दो 3 SHOs को हमने बुलाया सर. उनको सारा ये कंप्लाइंस सारे फॉर्म्स की कॉपीज हमने दी उनको. इस जितने भी 20 के 20 फॉर्म है हमने सारे उनको भरना सिखाया. और एक हमने अपनी कोर्ट में एक नोडल ऑफिसर को बिठा दिया जो 24 आवर्स एक हेल्पलाइन नंबर हमने खोल दिया सर. तो हमारे पास तो सारी कंप्लाइंस आ रही है सर. देखिए ये राजस्थान जुडिशियल एकेडमी को अभय जैन जी को साथ में कनेक्ट करके और सारे एमएससीटी के साथ एक कोऑर्डिनेशन सेल बनाना चाहिए. ये अभय जैन जी ने बड़ा अच्छा काम किया है और आई थिंक ये पूरे राजस्थान में होना, पूरे देश में होना चाहिए. मेरे पास तो इस समय 75 FARs आ गई हैं और अब इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट भी आ रही है. सब चीजें आ रही हैं. देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अगर एमएससीटी ही ठान ले बिल्कुल होगा सर. कल से मेरी अदालत में ये जस्टिस होगा. देखिए नॉर्मली एक मिनट के लिए आप भूल जाइए कि ये नया लॉ नहीं है. तो एमएससीटी में इतनी पावर नहीं है कि वो इतना ऊंचा बीड़ा उठे. ये लॉ ये देखा जाए तो इस लॉ ने रिफॉर्म ला दिया है. इस रिफॉर्म की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएससीटी के कंधों पे. वो प्रोग्राम तो अब फॉर्चुनेटली एमएससीटी अगर ये ठान ले तो ये लॉ इतना बढ़िया कानून है कि ये मिरेकलस लॉ है. सर फॉर्चुनेटली मेरे कोर्ट के साथ तो एक प्रोसेस सर्वर पुलिस का एक परमानेंट ड्यूटी पर भी लगा दिया है. तो वी आर डेली इंटरेक्टिंग. हमारी डेली रिपोर्ट्स आती हैं. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बजाज अलायंस में कहा है कि नोडल अफसर हर अदालत के लिए एग्जैक्टली इंश्योरेंस का भी और पुलिस का भी परमानेंटली आपकी कोर्ट में होंगे, हर वक्त खड़े रहेंगे. और हर इंश्योरेंस कंपनी अपना पैनल, वो जो स्टैंडिंग काउंसिल है वो भी वही बनाएगा. कोई सर्विस की जरूरत नहीं. इंश्योरेंस कंपनी से सर अगर यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जुड़ी हुई है, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे एक जरूर ये कहना है कि सर इंश्योरेंस कंपनी रिस्पांस नहीं करी. ना तो नोडल ऑफिसर लगा रहे हैं. पुलिस अपना काम करिए, कोर्ट अपना काम करिए, पर इंश्योरेंस कंपनी को हम कंप्लाइंस स्पेसिफिकली FAR की कॉपी भी हम इंश्योरेंस कंपनी में सप्लाई करें. एंड येट देयर इज नो फीडबैक. उसका देखिए दे हैव टू अपॉइंट अ डिसीजन ऑफिसर विद इन 10 days. अगर वो ऑफिसर अपॉइंट नहीं करते और वो अफसर 30 दिन में रिस्पांस नहीं देता तो आप अपने ऑर्डर में लिखेंगे कि इस आदमी की ACR फाइल में लगाया जाए. इस आदमी को पहली बात तो कानून नहीं आता और नंबर 2 अगर आता भी होगा तो इसने ठान लिया मैं कंप्लाई नहीं करूंगा. तो ही इज नॉट फिट टू बी प्रमोटेड और केप्ट इन सर्विस. सर ये तो चलिए ऑर्डर शो कॉज देने के बाद सर ये ACR में सोफा दी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वहां तक तो ठीक है सर. प्राइवेट कंपनीज में तो वन मैन शो चल रहा है. वो तो सुनते ही नहीं है सर. बिल्कुल नहीं जी नहीं. ये लॉ ऑफिसर को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है. Lordship, sorry to interrupt you. So we have the resource person for the next session, sir, with us. All right. Thank you. I think we are already overstepped the time. Thank you. Sir. Thank you, Lordship. I am privileged to extend our heartfelt gratitude for gracing us with your presence and profound insight. Your elucidation on the nuance of the new scheme of the MSCT cases and the evolving role of the stakeholders has provided us with a comprehensive view of the legal landscape. Once again, on behalf of Rajasthan State Judicial Academy and all the participants, I extend my heartfelt thanks for sharing your expertise and with introducing us with such a wonderful law. Thank you once again, Lord. Thank you. So. हाँ भी राहुल. हाँ Our next session is related इसने to पकड़ लिया. defense. I- Kindly switch off your mobile phone.
Our next session is related to defense available to the respective non-applicants and breach of conditions of insurance policy, scope and importance of Section 170 Motor Vehicles Act. We are fortunate to have with us Honorable Mr. Justice Arun Bhansali, Judge Rajasthan High Court and Chairman Working Committee, Rajasthan State Judicial Academy, to enlighten us on the above topic. With due reverence, I extend a warm welcome to His Lordship. His Lordship has been kind enough to bless us with his wholesome guidance on this important session. I express my deepest gratitude to His Lordship for being the continuous source of enlightenment to the Academy on various crucial topics always, and especially for today's session. Thank you, Lordship, for sparing your valuable time. I request your Lordship to kindly take over. Good evening, everyone. The presiding officers of the Motor Accident Claims Tribunal, the judicial officers who have the powers to hear motor accident cases, district zonal level nodal officers of the insurance companies, investigating officers, and faculty members from the Rajasthan Police Academy. I'm thankful to the Rajasthan State Judicial Academy for the purpose of giving me this opportunity to be with all of you on the subject defenses available to the respective non-applicants and breach of conditions of insurance policy, scope and importance of Section 170 Motor Vehicles Act. Now, you all have been dealing with all these matters day in and day out. The subject which has been given essentially it's like does not call for much deliberation. The necessity to talk on these subjects has arisen essentially on account of the directions of Honorable Supreme Court in the case of Gohar Mohammed versus UP SRTC 2023 4 SCC 381, wherein the Supreme Court exhaustively dealt with the amendments of 2019, which have now come into force, as well as, and in fact, directed that all the stakeholders and all those who are involved with the delivery of justice insofar as the motor accident claims are concerned, they may be sensitized with the amendments of the Act. And therefore, we are all together on the said aspect of the matter. Now, when we talk of the defenses available to the non-applicants, the claim petition seeking compensation arising out of an accident on account of use of motor vehicle is preferred either under Section 166 or under 164 of the Act. Such claim may be preferred by the person who has suffered the injury or by the owner of the damaged property or by the legal representative of the person dying in accident. The wrongdoer, that is the driver of the offending vehicle, is primarily responsible for the damages caused, and the owner of the vehicle is also liable for the same on the principle of vicarious liability. Now, once a claim petition is filed, it is essentially against the driver and owner of the vehicle. So far as the driver is concerned, the defense available, as you all know, is a flat denial of all the averments which are made in the claim petition, that he was not involved in the accident, or if he was involved in the accident, he can indicate that on his part there was no negligence. And then it can be extended to that there was a contributory negligence.
insofar as the other vehicle was concerned. Or if the more than one vehicles are involved, he can always claim that there was contributory negligence. Contributory negligence can also be alleged even against a pedestrian by indicating that he was like walking on the wrong side, or means all these defenses are available to him. Ultimately, that is the part of the reply which a person files. And then similarly, the owner can also take the similar defenses, that is no negligence, contributory negligence, and the third aspect can be of the composite negligence also. Now, contributory negligence and composite negligence, there are two different aspects. Contributory negligence is normally for the person who is driving the vehicle, and he is also the claimant. Whereas the composite negligence for the third party, that in a transport vehicle, a passenger is the claimant, and there is a collision between two vehicles, and if he wants to say, or a finding is recorded that both were negligent, then for that claimant, it will be a case of a composite negligence. It will have a implication ultimately on the liability to pay, because what the Supreme Court has laid down is that the claimant in the case of composite negligence can seek compensation from one of the owners or the insurance company involved. And then it is for the owner or the insurance company to seek the portion from the other party who is also responsible for it. Now, then the third party, that is the insurance company, that comes into picture. And as we all know, under Section 146 of the Act, no motor vehicle can be used in a public place unless a policy of insurance complying with the requirements of Chapter 11 is obtained. The policy of insurance indemnifies the owner against any damages that may be caused to a third party arising out of the use of the motor vehicle. Now, as we all know, when you use the word third party, it is first party, you can say insurance company, second party, the owner, and then the third party is ultimately the claimant. So it is always third party to that extent. As we all know, in so far as the practical aspect of the procedure is concerned, invariably the petitions are filed against the driver, owner, and the insurance company. There may be a situation that the actual owner may be there and a registered owner may be there, because we also have a law on this particular aspect, that ultimately who would be responsible, the actual owner or the registered owner or both of them. So this is one such law which keeps on evolving every day. Every day there is some variation somewhere in the matters before the courts, and then some interpretation is put, which leads to so many different aspects which keep on coming before us. So far as the right to defend a claim by the driver or owner is concerned, there is no restriction in the Act upon the defenses. Therefore, they can defend the claim on all the available grounds, both legal as well as on the factual merits of the case. That is the quantum of compensation which is sought. They can always dispute and lead evidence also on the said aspect of the matter as to whether the claimant, if entitled to compensation, how much compensation is entitled to. And so far as the
defenses available to the insurance company are concerned, the same are restricted to the extent as provided under section 149 2 of the Act as it existed prior to the amendment of 2019. The said provision specifies some of the defenses which are available based on the conditions of the policy. Such defenses are use of vehicle for hire or reward in breach of a specified condition of policy, use of a vehicle for organized racing and speed testing, use of a transport vehicle for a purpose not allowed by the permit, where the vehicle is driven by any person who is not duly licensed or is disqualified for holding or obtaining the same, and use of vehicle in war, civil war, right, or civil commotion, and the policy has been obtained by misrepresentation or by way of non-disclosure of a material fact. The scope of defenses available to the insurance company were considered by Honorable Supreme Court under various pronouncements. A three-judge bench in National Insurance Company versus Nicoletta Rohitki, 2002 7 SCC 456. It considered the scope of section 170, 149 and 170 of the Act, held that the statutory defenses which are available to the insurance company to contest a claim are confined to what are provided in subsection 2 of section 149 and no more. And for that reason, if an insurer is to file an appeal, such challenge in the appeal would confine only to those grounds. However, by virtue of section 170 of the Act, where in course of an inquiry, if the tribunal is satisfied that there is a collusion between the claimant and the person against whom the claim is made, the person against whom the claim has been made has failed to contest the same, the tribunal may, for reasons to be recorded in writing, implead the insurer, and in that case, it is permissible for the insurance company to take all the defenses which a owner of the vehicle, owner or driver of the vehicle would have taken. And it was laid down that it is necessary that the tribunal should have allowed the application under section 170 of the Act to avail all the grounds, and it is not permissible for insurer to contest the claim on all the grounds which are available to the insured. Now, that judgment came to be doubted, and matter was directed to be placed before a larger bench. The reference was considered by a bench consisting of 3 judges in United Insurance Company Limited versus Sheila Datta, 2011 10 SCC 509. In that case, the Honorable Supreme Court, like I just observed, that it is such an evolving thing that how the same provision could be interpreted, could be looked at. Like the Supreme Court in the case of Sheila Datta considered the entire matter from a totally different angle. After considering the entire scheme of Act, as also the previous judgments on the issue, it was held by Honorable Court that the Act does not require the claimants to implead the insurer as a party, but if the claimants choose to implead the insurer as a party, not being a notice under section, I request the participants, please kindly mute the mic. not being a noticee, then the insurance company can urge all the grounds, and its defenses is not limited to the grounds mentioned under section 149(2).
If the insurer has already been implemented as a party respondent voluntarily, it need not seek the permission of the tribunal under 170 of the Act to raise grounds other than those provided under 149(2). It was further held that the rights of an insurance company are significantly different when it is implemented as a party respondent to the claim petition as contrasted from merely being a noticee under section 149(2). If the insurer is only a noticee, then it can raise only those defenses that are available under section 149(2). But it is a party respondent that it can raise not only the statutory grounds, but also all available grounds like a person against whom a claim is made. As a consequence of the law laid down by Honorable Supreme Court through the said judgment in the case of Sheila Datta, once the insurance company is implemented as a party respondent, it can raise all the contentions that are available to resist the claim, which includes the right of appeal on all grounds. As we all know, the Act was amended in 2019 and it has come into force on 1/4/2022. By way of this amendment, Chapter 10 of the earlier Act was repealed and Chapter 11 was substituted in its place. Post-amendment, the defenses available to the insurer are now provided in the Section 150, which is analogous to the earlier Section 149. However, in addition to the already available statutory defenses, two more defenses have been added in the amendment. These include driving the vehicle under the influence of alcohol or drugs, as laid down under Section 185, and non-receipt of insurance premium as required under Section 64, capital VB of the Insurance Act 1938. So, insofar as the defenses available are concerned, the said aspect is taken care of by provisions of Section 149, now Section 150 of the Motor Vehicles Act, insofar as insurance company is concerned, and insofar as the driver and owner of the vehicle are concerned, governed by the general law, wherein all defenses which are available under the tort are available to them regarding the aspect of negligence, quantum of compensation, everything that can be raised. Now coming to the scope and importance of Section 170 of the Motor Vehicles Act, as we have already seen, Section 170 gives power of impleadment, where in course of any inquiry, the tribunal is satisfied that there is collusion between the person making the claim and the person against whom the claim is made, or the person against whom the claim is made has failed to contest the claim. It may, for reasons to be recorded in writing, direct that the insurer who may be liable in respect of such claim shall be implemented as a party and thereafter proceed in the matter. Stop. The circumstance can only be case where the insurance company has not been implemented as a party and it is only a noticee as required, and therefore in those cases Section 170 would come into picture as laid down in the case of Sheila Datta, and for that purpose the insurance company is required to move an application, and if
no such application has been moved before the tribunal, the application cannot be moved at the appellate stage. The tribunal is required to record reasons, which is the requirement of the section, and the said implement or the permission which is granted under section 170 necessarily would arm insurance to even cross-examine the witnesses on all the aspects of the matter. The further aspect pertaining to the breach of conditions of insurance policy. The defenses provided now under section 150 within brackets 2 of the Act are based on breach of the specified conditions of the policy. The scope of statutory defenses was considered by a larger bench of Honorable Supreme Court in the case of National Insurance Company versus Swansea, AR 2004 Supreme Court 531, wherein it was held that insurer is not required to prove the breach of policy condition, but it has to prove that there is a willful violation of the policy conditions on part of the insured. It was further held that even where the insurer is liable, insurer is able to prove the breach on part of the insured, it would not be able to avoid its liability towards third party unless it is established that such breach is fundamental in nature. The summary of the findings has been provided because a very elaborate judgment under para 105 of the said judgment. In view of what has been laid down in the case of Swansea, even if it is established that there has been a violation of the policy condition relating to driving license as provided in unamended provision of section 149, and such violation is not fundamental in nature, then the insurer is liable to satisfy the award towards the third party. And again, that principle of pay and recover was also introduced in the said judgment in the case of Swansea, that it can recover the same from the owner of the vehicle. However, the breach of policy condition is entirely different from a situation where the risk of the victim is not at all covered under the policy. Even if no specific defense is provided under section 150, it is open for the insurer to deny its liability on the ground that the risk of the victim is not at all covered by the terms of the policy. Therefore, the ratio of the judgment rendered in Swansea, where the claim is defended by the insurer on the ground that the risk of victim was covered under the policy, was not covered under the policy at all. For instance, the risk of a gratuitous passenger in a vehicle other than the passenger vehicle is not covered under the policy. Likewise, the risk of an occupant in a private car or two-wheeler insured under the Act only policy is also not covered under the same, and the insurer is not liable in this regard, even if such defense is not statutorily provided to the insurer.
This position is fortified in the judgments of Honorable Supreme Court in the case of United Insurance Company versus Tilak Singh, 2006, 4 SCC 404, National Insurance Company versus Asha Rani, 2003, 2 SCC, Oriental Insurance Company versus Meena Variable, 2007, 5 SCC, and National Insurance Company versus Balakrishnan, 2013, 1 SCC, 731. So these are the three aspects. In fact, the defense is available as well as Section 170 of the Motor Vehicles Act. They were all essentially overlapping to each other, and then the breach of condition of the insurance policy, mainly the law is governed, continues to be governed by the judgment of Honorable Supreme Court in the case of Swan Singh. Now, coming to the various facets of the violation of the policy conditions as to what is the law and what is the correct law. Now, you all are aware that this particular field of law is such vast, and every day you get now n number of judgments, not only of various high courts, but that of the Supreme Court also. And at times, if you compare them, they are also conflicting. At times, we may feel that they are conflicting, as we are well aware of the issue which continues to haunt us regarding the heavy motor vehicle and light motor vehicle. Now, 2 judges, 3 judges, and now the matter is pending before the Constitutional Court. Whether the driver having a license of light motor vehicle can drive a heavy motor vehicle compared to subject to the unladen weight of the vehicle as provided in the provisions of the Act. So, in every case, you will find that conflicting judgments on the same aspect are cited before us. So, I will not risk saying or discussing anything on a particular given subject, because if I say something on something, naturally you would always be in a position to say that this judgment says otherwise. So I will not risk that. And the only thing which I can talk to you regarding which judgment to follow in those circumstances, because on the same given subject, you would invariably find that there are large number of cases which are cited, which at times, as I've already said, that we find that there are conflict in that. I will cite or bring to your notice one very important judgment of Honorable Supreme Court in Career Institute Educational Society versus Om Shri Thakurji Educational Society. This is SLP number 7455 of 2023, decided on 24/4/2023.
where the Supreme Court reiterated the distinction between obiter dicta and ratio decidendi in a judgment as a preposition of law. And it reiterated a very important test, which is called the inversion test. Now, what is inversion test? The Supreme Court said that if you want to know the ratio of a judgment, then principle or whatever is being claimed to be the ratio of that judgment, you remove it from that judgment and then see whether you will reach to the same conclusion. If you can't reach to that conclusion, then that is the ratio. But if that portion is removed from the judgment and still you reach to the same conclusion, then in that case, it is not the ratio of the judgment which has been laid down by Honorable Supreme Court, what is called the inversion test. So this is very important because what is happening to us these days is that the conclusion of a judgment is cited before us to say, look at sir, these were the facts and this is the conclusion, and therefore this is the ratio of the judgment. And therefore the Supreme Court has to say this in this particular order which I have indicated, is that even the conclusion does not operate as a precedent. So that conclusion is not a precedent. What is precedent is what has been decided in that judgment, the ratio of that judgment. And how to get the ratio? The inversion test is the best way of finding the ratio of a judgment. You remove that portion from the judgment, whether you will reach the same conclusion. If you can reach the same conclusion, then it is not the ratio of the judgment. So this is very important. And then the other principles of citing of a precedent as to, in a case where you have a judgment of the Supreme Court, you have to follow the judgment of the Supreme Court, you have to ignore the other High Court judgments. If you have judgment of your own High Court and a conflicting judgment of some other court, other High Court, then you have to follow your own court. If you have judgment of a division bench and a judgment of single judge, even you have to follow the division bench judgment. And there is one more important aspect, that if a division bench judgment is there, that division bench judgment has been taken into consideration and something has been laid down by the single judge, then you can't come to this conclusion that the division bench judgment is applicable, because the interpretation of the division bench judgment which has been made by the single judge, even that is also binding by way of a precedent. This is an important aspect because at times we have seen cases where a single judge judgment is cited and then it is said that division bench has said so, despite the fact that the single judge has taken into consideration the division bench judgment and has come to a particular conclusion. So in those circumstances, even the determination which has been made by the single judge qua the division bench judgment, even that is binding. And then ultimately, no two cases are similar. This is a very important aspect which I want to emphasize based on my little experience, like now over 34 years, is that these motor accident cases, or like any other civil case, no two cases are similar. And therefore, even while implementing or applying a judgment,
please don't go by the head notes. Just have a look at the facts also of the case, because at time you may find that if one small difference in facts of the two cases, one which is cited before you or one which is to be decided by you, that can make a sea change. So that is very important, that we don't go by the head notes which are of the judgments which are cited before us. We just have a glance at the facts also of the case, whether it would be applicable to the given facts. On various aspects, the Supreme Court has laid down, or rather it has removed the creases and has laid down categorically by way of mathematical precision also. And in various conferences, I have heard Honorable Justice Call indicating that they are in the process of further formulating, insofar as the quantum of compensation aspect is concerned, that things should become easier for the courts, for the parties, and for the insurance companies as well, for determining the quantum of compensation. So this is all, though I was given 1 full hour, but the subject which has been given, I think this is taken care of already. आधा घंटा We can have some question answer from the participants if they wish to ask some question. I think so. There is one question. Yes. Provisions of pay and recovery has been removed in the new amendment act of MB Act, and the Swan Singh judgment is based on the old MB Act. He has asking some suggestions. He's asking some suggestions on that. No. Even the old act also, there was no provision. It was only laid down by the Supreme Court only, of while it one of the earlier judgments, while passing the final order, it said that yes, insurance company is not liable, however, it will pay and recover. And then those aspects kept on coming before the court. Then the insurance companies raised objections. Then this particular aspect was ultimately contested and decided in the case of Swan Singh. There was earlier any provision, which provision has been removed from the act, by which we can say that the pay and recover does not apply, because there is no restriction under the amended provision that court will not pass an order for paying and recovering. I don't think so. So there is one more question from Rajesh Goel. He is asking, sir, sir, can the insurance company can be insisted to depute nodal officer on the very first day of MSCT case listed, where IAR or intimation not received by the MSCT and insurance company as narrated by MSCT Bikaner officials? I think this question is related to the first session. No, but narrated by MSCT Bikaner officials, I think they can answer this. Someone from the MSCT officers can answer this question. Question, I will repeat the answer question. Sir, can the insurance company can insisted to depute nodal officer on very first day of MSCT case listed, where the IAR or the intimation not received by the MSCT and insurance company as narrated by the officer MSCT Bikaner official? सर इसके अंदर मेरा ये कहना है कि हम यहाँ पर इंसिस्ट नहीं करेंगे तो लॉ एप्लीकेबल कैसे होगा, और इसके लिए जैसे कि अभी हम 9% के ऊपर
अवार्ड पास कर रहे हैं, तो अगर हम इसकी इंटरेस्ट रेट हाई कर देंगे, क्योंकि स्पीडी डिस्पोजल के लिए इंश्योरेंस कंपनी प्रेशराइज कैसे होगी? आज कोई नोडल ऑफिसर और डेजिग्नेटेड ऑफिसर हमारे सामने नहीं है, तो उसकी एसीआर में कोई एंट्री करना और ये सब चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज अगर हम किसी को, और इवन अगर प्राइवेट कंपनीज की ये इश्यू है, तो वहां पर तो कोई एक ऑफिसर है ही नहीं, एक बंदा पूरे राजस्थान को डील कर रहा है। तो ऐसे के अंदर हम तो इंश्योरेंस कंपनी को ही इंटरेस्ट ज्यादा करके उसको लायबल करेंगे, और इनहेरेंट पावर तो ट्रिब्यूनल के पास में सिविल प्रोसीजर कोड में है ही सर। और जब तक कोई इसके ऊपर जजमेंट नहीं आता है, तो इस एक्ट को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ तो स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। तो इसी लाइट में मेरा ये ऑर्डर था। Madam, we can't use the words like pressurizing. प्रेशराइज नहीं सर, स्पीडी हाँ, डिस्पोजल और yes. विक्टिम। इवन सर अब ये पोजीशन है कि 140 तो अब डिलीट हो गया। तो आज एक इंजर्ड पर्सन है जो 100% डिसेबल हो चुका है, वो अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। तो इंश्योरेंस कंपनी को अगर हम ये इंटरेस्ट का अगर रेट बढ़ा के कुछ नहीं लगाते, इम्पोज नहीं करते हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मेरा सर इसी वजह से ये था, मैंने ये ऑर्डर किया था। So we have to only talk of speedy disposal. जी We सर, just स्पीडी talk of डिस्पोजल। और जहां हम अब जो एक pressurizing. विक्टिम था, उसकी डेथ होने के बाद में उसकी फैमिली के पास आज कुछ भी नहीं है अर्निंग में। Step over. Step over. No, you can continue, madam. क्या कह रहे हैं आप? Okay. Anything else? Can we have one more question? If I think so, we're done with the question also. Anyone else? Mr. Jain, anything to ask? Because I can see you only. हाँ, सर आपका माइक म्यूट है सर. Sir, good evening, sir. So Good there is a evening. one peculiar problem which probably all the MSCT courts must be facing is with regard to the fact that after the issuance of the notice, sir, there is a lot of time taken by the insurance company to file the reply and also by the driver and the owner, sir. So I just wanted to ask, sir, if we can invoke of course, the CPC does not apply to the MSCT court, sir. yes. So if we can't be stringent enough to apply the provisions of Order 8 by restricting that there's a power to close the written submission, written reply. Essentially, what is provided in CPC is the principles. Sir, So you can not say that in view of the provisions of CPC, but then you can always restrict it that you have been given 3 chances or 4 chances, and therefore you close it down. Let them so take we are its giving. chance. What will That is happen? the- What will happen is that even if he comes out with the application, Sir, thinking that I may be permitted, at least on the next day he will file it. On the next day he will file it. Because that is otherwise, for sure, sir. yes, otherwise if you will keep him giving in 5 chances, 6 chances, 8 chances, then there will be no end to it. But at There will the be. chance or the 5th chance, if he will close it down, then on the 6th chance, at least he will come out with this. And if he is not interested in filing, end of the matter, doesn't matter. But I Because think, sir, this is absolutely correct. You are absolutely correct on this aspect of the matter, that even responding, which should be based on the material which is already available with them. Now, these days, what is happening is that the insurance companies, on their part, they have been trying to do a lot of investigation for the accident. And they take a lot of time in responding, mainly because that their investigation is not over. Because lot of matters have come before the court also
pertaining to your fake licenses and all those things. Now, Sir. earlier, it never used to happen. The insurance companies were mostly in default. Their written statements were almost cyclostyle written statements. They will oppose everything, and then at the end they will make a caveat that keep our right open to raise all the issues or all the objections as available under the law. They would not raise any objections. But now the level of investigation which are making, the number of cases of fake licenses or licenses which have already been, those licenses which had expired. Now those matters are coming up before the tribunals because of their investigation of the insurance companies. So they are taking definitely a bit of time now, but insofar as the owner and driver are concerned, and they have hardly anything to like investigate or do something. So they at least must file their response in time. So because of, I'm facing a one particular problem, sir, in the Banswara district, there is a lot of cases of fake implanting of the vehicle, fake license. It's a hub. I think the Banswara is the hub, sir. I can say with conviction. But fortunately, sir, with the implementation of the Honorable Supreme Court judgment in the case of Gaur Mohammed, which I have implemented thoroughly into the Banswara district, sir. Yes. What I'm finding it a noticeable change that even the FIRs which have been registered recently post 1st May 2023, at least 5 FIRs have been withdrawn by the complainant, saying that it was it was a fake case and we want to withdraw the FIR. But in fact, means you are absolutely correct. There are, even when these appeals come before the court, you on face of it sometimes find that they are absolutely fake cases. One of the cases which were decided, the nature of allegations, the vehicle, mainly the involvement of the vehicle, at least the means the deceased, he had suffered 40 fractures. Sir. And the vehicle involved was a Maruti 800, which was fixed up. Which was implanted. Sure, Yes, sure. absolutely implanted. Maruti 800. With the 40 fractures and Maruti 800, the person should not be alive, sir. So means these are kind of things which are quite obvious, but this can be taken care of. This can be taken care of insofar as the filing of the replies or expediting the filing of the replies, because unless the reply is filed means the things don't proceed further. We can't proceed further. Sir. Yes. So it can be expedited. You mentally fix a thing like giving of 4 chances or 5 chances, or like 4 chances for the owner, 5 chances for the insurance company kind of thing. Because owner and driver, when you know that there is an insurance is available, so mainly it is the insurance company which is contesting. Correct, sir. Because the response of the owner ultimately is that even if I am found liable, the liability is that of the insurance company. This is what the general defense, or rather the written statement, is like this. So, sir, I'm yes. trying to sensitize the insurance companies also there. Yes. But unfortunate, whatever my little experience is, sir, even the insurance companies, they hardly care, sir. Even if the insurance people are listening, they hardly care for anything, sir. It's very difficult. But the insurance people also, at the end of the day, they also have to understand this, that the delay is not in their, it's not to their advantage. That ultimately, as and when the award would be passed, it will be from the date of filing. The interest will be from the date of filing. Interest will be from the date of filing application. So even that is not in their, it is not to their advantage to delay the filing of the replies. Rather, sir,
I've even tried an experiment by awarding an exemplary interest of 12% and giving a reason for it, that why an exemplary interest is being awarded in this case. And yet, probably, I thought that this might be an example for the insurance company to at least give the evidences and give the replies on time. Because on the other hand, the order sheet says that at least 15 opportunities have been taken for the reply, 15 opportunities for the evidence. Because over a period of time, I have seen changes, because since 89, because my father was a counsel for the insurance companies, so I had seen those cases. And like when I started deciding in 2013, there is a sea change. Insurance companies are concerned. Very true, sir. Very true, sir. Highly obliged, sir. Highly obliged. So there is one more question from the Rishikesh Kumar. He is asked the delay on the part of the claimant in proceeding. Can the interest liability can be waived for such delay on the claimant part? Yes, definitely. There are judgments on this particular aspect, that the tribunal, if it comes to the conclusion that the matter has remained pending for the evidence of the claimant for over 2 years or 3 years, there are examples. For 2 years and 3 years, it can cut down. It can say that though is entitled to interest from the date of filing of the application, however, as the application or the disposal has taken time, this period is attributable to him, then it can be, yes, it can always be reduced by that extent. He has further asked one more question, sir. He is asking that as per the CPC, only 6% of interest can be invoked. Can you suggest something on this? No. Means interest is the discretion of the tribunal. It has not been restricted. And then what we are doing, or like everybody is doing, is as and when the Supreme Court awards any interest in a case, now that is taken as a precedent, where the Supreme Court has awarded 9%, or if 9% has been awarded and that has been reduced to 8% by the Supreme Court, then that is cited as a precedent, that Supreme Court has awarded 8% or 9% or 6% or 7%, and therefore that should be awarded. But CPC, the insurance company people, are you prepared to apply the principles of CPC for all purposes, or only for Section 34? Then your response will be closed in 3 dates by the tribunal. No, means the Section 34 has no application insofar as the MSCT matters are concerned. I think we are done with the question answer. So shall we continue? Yes. Thank you, Lordship. On behalf of Rajasthan State Judicial Academy and all the participants, I extend a heartfelt gratitude for gracing us with your presence and invaluable insight during the session. Your presence has enriched our webinar and will continue to inspire all those who have had the privilege of listening to you. Once again, on behalf of everyone present here, sir, I express our sincere thanks for your valuable contribution to this session. As we draw the insightful webinar to a close, I would like to extend a heartfelt vote of thanks to each and every participants who have joined us today. Your active engagement, thoughtful questions, and shared enthusiasm have truly made this session vibrant and enriching. A special note of gratitude to our esteemed source person, Honorable Mr. Justice Arun Bansali Saab and Honorable Mr. Justice J.R. Midha Saab. Your expertise, profound insight, and generous sharing your knowledge have elevated this webinar to an exceptional level. To all the participants, your presence has been the driving force behind the success of this webinar. As we conclude, I encourage you all to carry forward the valuable insight gained today into your professional journeys. Thank you once again for being the integral part of this enlightening webinar. Your participation has made all the difference. With that, now I close the webinar. Thank you once again. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Independence to all of you. Thank you. Thank you, sir.
Thank you, sir.